Okay. Okay. ये क्या कह रहा है? इंटरनेट देख लें। तो अब मैं आपको मैनुअल एंट्रीज दे दूंगा कि देखें ये नंबर है नैस्डैक, ये ES ये जो एरियाज के ना कि यहाँ से आप सेल करें, यहाँ से बाय करें। जिस तरह फ्राइडे पिछले जब से ट्रम्प आया है मैं मैनुअल ज़्यादा बोल रहा हूँ कि यहाँ से ज़्यादा सेफ रहेगा। फिर आप बैठ जाएं, बैठे रहे एरिया पे। Okay, let's do Monday to Friday areas, Nasdaq. Content live. Let copy. All right, live stream is up as well. That's done. Welcome anywhere, sir. First come, first serve. Please, sir. Check Ninja if this connected. Yeah, but I cannot see this. Click there. Okay. It's just got hidden somehow. I'll fix it. No problem. If I right click, move, it got hidden in the dark. Oh. Now I will save it. So, yeah. It's a one question. yeah. I cannot see you on your videos, and it's saying that I have. Yeah, I'll fix that. Tonight it'll be fixed. Tonight. Okay, live stream is good. $19,780. गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है आपका? वो हो गया था पर्डिया अप्रूव? TMP वाला आ गया अकाउंट? लिखा हुआ लाइव अकाउंट इन प्रोग्रेस। बस ठीक है, लेकिन कोई अकाउंट तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, हेलो जी, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम फिर इधर बैठे राइट साइड पे, क्योंकि आप लोग जितने ब्रांड न्यू हैं इस साइड से। ओह माशाल्लाह जी, वेलकम, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस, वेलकम जी।
सो मेरे इसका मतलब है आज शुरू हो रहा है, बैच 4 आज हुआ है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. 19 bases down, pressure is down. Let me fix my 19,780. Audio video check on YouTube. I assume YouTube is okay. Zoom is okay. Audio is good. Audio is good. Audio is good. That's fine. Okay, let's take a look. We have to use the simulation. Simulation, correct. Simulation. All right, let me quickly get started. Good morning, everybody. Monday, May 5th, 9:06 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys joining us at superareas.com. Welcome. Let's take a look at what Nasdaq did last night. New student, if they are, they can. And a new student? Yes. थोड़ा सा इधर आइएगा. So for easier for me to like this, आगे आ जाएं इस because otherwise I have to switch back and forth between. There you go. That's perfect. अच्छा मुझे लगा अगले मंडे को है, इस मंडे. Okay, that's fine. No problem. All right, let's take a look at first Forex Factory, what Forex Factory did for us. So we have news at 9:45 and 10 o'clock. So this is going to just make sure it's red news. So we worry about at 10 o'clock, the trade. What did Nasdaq do last night? Last night high is 20,201, 20,201, and the low is 19,966. 966. 19,966. So that gives us a range of 231 points. Where are we right now? 20,000. So we are right in between, very close to S1. So let's take a look at our charts. We have a night high and low for 5705 and 5655. 5705 and 5655. 5705 and 5655 is low and high for ES. All right. So that kind of gives us some numbers to work with. And for NQ, I'm looking at 20,201 and 19,966 as low. So
Okay, so what the plan for today is low to high and high to low, meaning we'll wait for price to go to expected low. So Nasdaq, let me open up my charts. Yeah. Trading PC. So right now for ES, we are between R1 and S1 at the moment. Let me take a look at Nasdaq. So I'm very close to S1. So S1, last night price tried to test this number around 20,000 quite a bit of a time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, almost 10 times. If I look at it as 60-minute chart, yeah, so at least 7, 8 times it tried to test. Base is down, pressure is down right now for let me try to pick my ideal numbers of area trade where I will go long or short from. The new users who are just joining us for the first time, I'll do your first day orientation around 10:30, 10:30, 11 o'clock. I'll explain you what we are, what do we do, who am I, what my role is, and how you're going to make ridiculous amount of money if you stay disciplined and only focus at $100 a day. That's all you need, and it will lead you up to $10,000 a month. And I know math doesn't add up on day one, but and you'll see real traders who come in and they will give you presentations 4 or 5 months into it. 10 to 12,000 a month is easy. Only thing is discipline, because you gotta wait for the right entry. Otherwise, but I'll tell you how to buy, how to sell, what type of orders there are. That's all my job is. But around 11 to 1, you'll get it. Good morning, G. Okay. So Nasdaq, I will do R2. Yeah, R2. शुक्र है स्लो वो अभी उठ जाएगा 10 बजे तो सही हो जाएगा शेयर है ना हमारा so NQ I'm looking at R2. R2 is the number approximately because the Friday high is 20,277, right? That's our Friday high, and we are falling into the same. So yeah, R2 for Nasdaq, and where is it? It's almost. Let me check the difference. 20,000 minus 19,810, so 119. So S2 would be okay. S2 and R2 for Nasdaq. Like so, I'm skipping one in between. For Nasdaq users, if you want to take your own S1, S2, R1, R1 and S1, you're more than welcome to. But price should test first R1 as well. But because of the speed of Nasdaq, better to stay slightly far. And now let's come to ES. Where could ES good numbers fall into?
5730 is I'm picking for, which is approximately R2 at the moment. 5730 सर, R2 से अगर शॉर्ट होता है तो ठीक रहेगा. $57.30. So all of you should go into simulation mode. Now what will happen is in about 1 or 2 days, your demo will expire. Right now, about 2 weeks ago, you signed up a demo on ninjatrader.com. It's good for 2 weeks. So every 2 weeks, just open up a new email, Gmail, Yahoo, Google, doesn't matter, and sign up, because demo only works for 2 weeks. So if you go and click simulation and you have an error called data not delayed, and that's the error you will get, data delayed. That means your demo is expired, right? So just to know, this is how it's gonna give you an error. So, but we'll help you. There's a guide online that tells you how to do it and everything. So. जी सर. टेस्ट है? टेस्ट टेस्ट खोलना है, ठीक है, मुझे एनी टेस्ट है, आपका टेस्ट खोल रेडी कर देते. वन फाइव Immediately. 15 613 189 613 एक्सेप्ट करें. सॉरी सर, 5 से 7 दिन, बेटे को मेरे 7 दिन लग गए थे. अगर आप लॉग इन करें, मैं भी देख लेता हूँ, लेकिन टीएमपी वाला कोई अकाउंट नहीं है. उसके अंदर टीएमपी लिखा होता है. ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये गड़बड़ है ना, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है. ये आपने मना किया था कि नहीं यहाँ अपना नाम लिखना, सिग्नल सबमिट सर, आप अपना हमारा अपना तो करना था, इसीलिए डिले हो रहा है. पता लगे 7 दिन और ना आया होता, क्योंकि ये एग्रीमेंट है. गुड मॉर्निंग जी. सर ये फॉर्म भर दें तो आपका आज से टेस्ट शुरू हो जाएगा. नेम, फर्स्ट नेम, पासवर्ड, एवरीथिंग. सर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आगे रेड वाली है, तो 10 सवा 10 के बाद करेंगे. सवा 10 के बाद थोड़ा सा आसान हो जाए जरा तो.
सर ईमेल कौन सा दें? कोई ले लें, डजंट मैटर, जो आपका ईमेल जीमेल दे सर। जीमेल दें, डजंट मैटर। देखते हैं क्या हम टेबल नाम गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, आगे 3 सीटें खाली हैं, आ जाए। ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली बिगिनर्स के लिए, अदरवाइज आई हैव टू स्विच बैक एंड फोर्थ। सर आप इस एक बैच तो आगे है ना उससे।
मैंने किया मेरा ऑप्शन एरिया इसका यही इसके भाई ऑप्शन नहीं मैंने तो किया ना ये तो देखा था माइक्रो फ्यूचर्स माइक्रो माइक्रो यहाँ देखो जून 25 April 25 0625 जनरली R2 हो गया, फॉर्म भर दें। अब ईमेल में जाएं, कंफर्म करें। कैसे नहीं यार अलग भर देना है 5476 ये 96 है नहीं 41 है 40 ठीक है सैटरडे में बोलते हैं साढ़े 7 इधर थर्ड में नहीं है चंदा बोल रहा था वो मैं तो रात नहीं 10 बजे करते मार्केट नीचे जाने वाले भाई कुछ भी है प्लेस है ये ऑनलाइन से ऊपर है थोड़ा देर आपको चालू होता है आप एरियाज में करना एरिया में करना नहीं मैं इसको ओपन कर रहा हूँ चेक कर रहा हूँ हाउ इज द एरिया गोइंग ऑन That's not आएगा पीपी का नीचे चला अभी 10 बजे आएगा हॉलीवुड का टैरिफ लगाएंगे बोलेगा
and one thing and well. Quick the different and good credit. I look up to my ISM. But and for press conference, press conference. So I would be a big share of the market. I say, and then I is 6:15 a.m. outlook around 9 p.m. I have never I did it like everybody else right now, and 21 years London way before the site now. Never seen big and just like me, that's a pretty big push and the side. There's the down back I can go on it. So next time and find it on two bigger push. And our two are 2475 by high it's 1,400 to 600 just but 69 I'm on my like very funny or that is big that's why you get and it's on and it's under wood downside. Nine point downside. Nasdaq urban points and export for downside. Up for both are very close to expected time for today and it's in India and on the big one up and green and is open up and it's just was then American that crazy and
Would think would any under the pump, but right now, 57 right now at our I and that out at size and for All right, that was your thing. High to go low and low to go high. So R2, S2 is my plan. But you cannot have here. So change here to the from the SP to the Bitcoin, but I want to back. Yeah, I want to back to the SP again. Yeah, go ES. SP then Yeah, वो देखिए ऊपर लिखा है ES June on the right on top, June 25th. Yes. no. Yes, it's there. Yeah. No problem.
So new users just green to buy, red to sell at a mid-band price. Practice that until, just hang in there until 11. I will get you guys going. No problem. So 5 minutes, guys. There's news coming, so be ready. News coming at 9:45 in 5 minutes. Legends? Yeah, no problem. मुझे एनी डेस्क दें, व्हाट्सएप करें ताकि मीन न्यूज़ से मैंने तो ट्रेड करना शुरू करना है 10:15 मैं आपको सेट करवा देता हूँ और फिर उसके सारे रूल्स बता देता हूँ. Just 5 minutes limit. Since 3 of you are starting the test, I'll explain in one shot how everything is. So let's. Take a picture of this. This is your username, password for your test. Okay. Indication that you should buy. ये फॉर्म भर दे. लेजेंड सर पहले आपको गुजारना है उसमें से. अच्छा ओके समझ में प्राइस आप बता रहा है ये मार्केट है limit or you market it? Like limit order, yeah. Market sell liquidating. Stop लगाना तो इसी पे नहीं market current the small triggers are on gonna chart. Like 300 we had. Complete tournament.
नोट करना होगा You're all done. Explain trade like normal. So you have $1,500. Okay, and I'll explain you full rules as soon as they sign up. Okay, so I've logged out. But this website, Trade Await, open it first before you do anything. Because if Ninja crashes and you have to do, guys, news time 9:45. So next high impact news will come at 10. So always open this website first. This tells you you see 25,000. That is your, so if Ninja crashes, anything happens, even download Trade Await on your phone. You need to close an order. You have to make sure you can exit. Otherwise, if you wait for Ninja, your account is gone, right? So, है level 1 0 वाला, $0 वाला. नहीं अभी एक सेकंड थोड़ा सा एक सेकंड दीजिएगा. मैं मेक श्योर कि कोड डाल दूं, आपको फुल प्राइस ना पड़ जाए ना. थैंक यू हाँ, सुपर एरियास 70 तो लगे 165 पे कर दिए. 50 का अकाउंट है. Yeah, so now you can fill up your stuff. That's good. S2R2. Okay. Okay, ये लिखा है ना 1500, ये आपका अकाउंट बैलेंस है. ये लिखा है 25,000, इसको 26,500 करना है बस. और सेंटर में लिखा होगा 00. करंट रेट जो चल रहा है वो 0 का है और आज बनाया भी 0 है. तो ये आपको लेजर डेली का बताएगी. कमीशन इसमें कट सकते हैं सर कमीशन की स्ट्रेस ना ले. हाँ, कट के बताएगा सब. So after most users are waiting for 10 o'clock to huh? One. So I'll explain you all the rules. I don't touch right. Sorry? I don't touch right. No problem. Yeah, no problem. बताने के बाद Sure. अभी सिम में कर सकते हैं सिम में. आप. सिम में कर सकते हैं. Thank you, sir. No problem. So I have to log out this one and then again sign in. No. अब 3 डॉटा टक 10 o'clock. 9:45 वाली चलेगी. यहाँ से पिक कर सकता है. अभी यहाँ से
इसमें पाएगा ना इसको उठा के रखो आया शुरू हुई यहाँ पे बुलिश जाना चाहिए आज तक तो पिछले तो ये R1 R2 के बीच में यहाँ से R2 के बीच में कहीं ऊपर जाएगी एकदम से नीचे से मारते हैं I'm thinking, very sure. Let's see the condition. The low, high, low. All right, heading towards this one slowly. Let's see. Because our night session is 56.55. I think that's only very sure. Didn't touch mid-band quite well, but that's a gap trade. Take care, you're done. R2S2. That's what my game plan is. नहीं सर, ये नहीं जो आपको उन्होंने दी है ट्रेडवर्ड से, यहाँ से ना उन्होंने आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड दिया ये
आप प्रोसेस ठीक कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला यूजर। Five minutes news, guys. Be ready. Oh, sorry. Non-professional. प्रोफेशनल वाले आपसे फीसें लेते रहेंगे। Three minutes news. So today's high has been what, 20,069 currently, 19,980, 89 points. है? नहीं anydesk.com ऐप डाउनलोड करें, बस डबल क्लिक करें और वो नंबर दिखा देगा। सॉरी क्या जी? हाँ जब रियल कट जाए। मेक श्योर एक ही कॉपी ऑन हो, एक ही कॉपी। मुझे एनीडेस्क व्हाट्सएप कीजिएगा। This new means Up or down doesn't matter. Let's see where it goes somewhere.
ठीक है, अब आपका ये खुल चुका है। इसको मैं बंद करता हूँ, because you don't need any TradeOver itself platform है। सर मैंने आपको legend, all right, news came, we are in somewhere, yeah, fireworks थोड़े बहुत शुरू हो गए, shooting up। अभी अभी ये वाला ये वाला ये लगा टच लाइक देखिए ऑलरेडी फुल तो गया ना, फुल तो गया ट्राई कर Okay, if you're able to connect your internet with hotspot, then you will be okay, then you're on. एक्सेप्ट कर लें। नहीं, आपने इस तरह नहीं जाना, लोकल कॉपियर ये होता है, आप तो रिमोट मोड एनबीटी पे थे ना, ये लोकल कॉपी है। सॉरी, नहीं उनका एनी डेस्क था, आपका रेडी है। अब आप सिर्फ हॉटस्पॉट से कनेक्ट करें, लॉग इन कर दें माई निंजा से, एंड यू आर गुड टू गो। सॉरी, नो प्रॉब्लम।
जगह है तो कर देगा क्रिएट सही बात है इसलिए आपको स्लो All right, it's coming down fast. That's good. First mid band is coming. 71 is the mid band for new users. आपके गेम करना सीखिए एक मिनट मैनुअल को स्टॉप करें नहीं स्टॉप में एटीएम If it picked up your order, you got your 2 points. Top of the bar is done. Mid band is done, 2 points. 71, 75 install it, right? Sorry? 71, 75, you can. Yeah. So, but you sold it and came down though. I saw a couple of points from there. So just this mid band or top of the bar is done your trade for. Everything is magenta. You sold and done. Three points I picked up from this mid band. So new users, one chart is red, one is green, no trade. Both are red, sell. Both are green, buy. And I'll complicate things for you shortly, don't worry. Yes, sir. See the S1 In the 30-minute chart, you should have this chart, like that explains at the bottom. If you have the charts, this chart has all the levels for you. The one with the candle, the candle? Yes, exactly. Japanese candle that shows your. आपका स्टार्ट हो गया नहीं इनका आपका ठीक है सर यहाँ लिखें गेट स्टार्टेड और अपना फॉर्म भरना So price hasn't gone anywhere in terms of area, so we're still waiting for something. So we wait for this. Yes, those that do area trade, they wait and wait and wait until the number hits. Right now between S1 and S2, so if I was to buy, whether it will come at 5 o'clock, 4 o'clock, 3, doesn't matter. I have my order placed at, let's say S2, 56.15, I will go long. And when the price goes to 57.30, I will sell. I only play with the areas from ranges, support and resistance. I'm not looking to buy with mid-band. Yes, in a long, you have a mid-band right here, you buy, or that's scalping, 1 or 2 points. But big numbers come from areas, right? So
the screen 1510. Yes. That's where we use main. We buy and Yeah, but that's for if you want to just use area system. Okay, you have to understand, I have users who use 10 different type of methods. Area users don't look at anything else except number. So that chart is only, it's for advanced users, I would say, meaning that if you are watching in my case, you see, I have nothing on it. I have no indicators, no triggers, no large. All I care is where's the price. When the price hits in these boxes, I will sell. If it goes here, I will buy. But beginners, we have to teach you how to use these charts. See, if you bought it right here and you're done your 1 point around here, there you go. You're done your 1, 2, 3 points. Exactly. So in and out, these charts are good. For long trade, these charts are good. okay, so the one on the right, which has the number 1510. No, numbers are everywhere. No, the one on top, like MD trend. Yes. That's the name of the chart. No, that's called a 30-minute chart, or we call it slightly different. There's a name written right here. Correct. 30, 20, 15, 10. Correct. So what 1510 is what we mainly use. 1510 is 30 minutes. No, it's not a minute chart. I don't think you've seen my videos. I have watched some of them. Not all of them. Yeah. So that explains you, if you were to take a mid-band trade, you would take it on 1510. Correct. So you would buy right here and you're done your trade already. So that's it. So beginners just use that. This chart is green, this is green, buy right here. Both are red, buy. So area trade, either pick a number and then wait for it. Wait until 8 hours, 4 hours, 6 hours. No trade for you until you wait for a number. So what is the other chart? This chart? Yeah. These are called price action charts. Okay. And these are called time charts. Okay. Difference. So area trading, you wait for a number to hit your no. So computer today predicted, let's say ES, to kind of give you an idea, that if price goes between S1, R1, R2, R3, so I'm picking myself R1, R2 today. Correct. When this price hits 57.30, I don't care background color. I don't care resistance. I will just sell, take my 5 points, exit. When price goes to S2, 56.15, I will buy. So that's the trade I pick. Some users want to trade here. They want to take in and out. So if you saw this is green, this is green, this is bullish, this is bullish, you put your order here, you're done your whole trade and go home. That's it. So if your target is $100 a day, whether you want to do it here, doesn't matter. Even if you took a trade right here, you're done your $100 right now. So it depends on you. Like if you like to use this chart, that is it. They all do the same job. They all do that. They just different analysis to use this. This is doing like very fast. This is based on when the numbers will come. Where was your video? Because when I go on a super line, Sorry? your videos are in the same. Yeah, it's on super areas. All of them are super areas. Yeah. So that explains you every single detail in person. आपका ईमेल वो कह रहे पहले रजिस्टर हुआ है कोई वो कह रहा है your email is taken already. नहीं लेजेंड पे तो आपने कभी बनाया नहीं होगा अभी बनाया था तो ये टेकन कैसे हो गया चलें कोई और बना लें So one more question. So let's say you say that you use the left chart with the. So how do you define? Actually, how do you experience? I have 1,000 days of experience. No. Okay, sorry. So how do you actually say that I want to buy at this point and I will sell it at this point?
Computer has predicted 4 levels here, 4 levels here. So that's not my job. Computer did it, right? So based on the previous history of how fast ES can move, I'm skipping a level. Because if I decide to sell here, yes, it can work. But based on Trump, based on everything, I can hit my stop loss here. I don't want to do that. So my better chances are I will take R2, S2. Correct. So how do you technically actually do it? That's what I'm No, just click and sell. So I will place an order. Can I click on that chart? Or Yeah. I click on- That's what I'm saying. There you go. So I will have chart trader enabled. So, Okay, so right here, I will go to 57.30 and done. My order is placed. When price goes to this number, 57, let's say, bring it down slightly. There you go, 57.29. When it will come, it will take my order. That's it. Then how do you define, okay, at this point sell? No, so I have defined it. I've defined it. So when the price will hit this number, It will buy. it will sell. So it's a- Sell. Now, if I go right here, S2, I can say buy right here. Done. I will now sit and sit and sit and sit until these numbers, I'm monitoring it, right? Correct, but then you have to sit in front or it will do it by itself? No, you have to. It will pick my order itself, but I'm not leaving it unattended. Okay. Because it's like playing with the fire, burn your house or give you warmth, right? So if you don't pay attention, so now I'm ready. If the price goes here, it will sell. If the price goes here, it will buy. That's it. Two things cannot happen. One of two things will happen. Either it will go here or here, right? So, Okay. so I cannot go to two places at the same. It's not something you can say, okay, buy this and also sell it. No, I did. That's what I did. I placed a sell limit right here. Yeah. And then I placed a buy limit right here. That's it. So let's say it automatically hit the top. Sorry. Yeah. So it will cancel the bottom one. It will cancel the buy one. Cancel the buy. Yes, because Now you have to go and take your exactly. You can put the limit. Correct. You can 30 minutes. Sure. you can put the limit also. Correct. Give me 1 second. I will. But this takes a patience of like I have a lot of people who don't have that kind of patience, right? So question was, you cannot say, okay, if it is $100, buy, and now the same one, if it gets to 150, selling. yes, correct. You can do all of that automation. Okay. So you can define everything inside these, something called ATMs. That's where the advanced trading comes in. So I can say quickly, wherever my order gets picked up, right? I see $250 profit, close it. Okay. I see $250 profit, $200 profit, close it, a loss. So now I've defined it. Yeah. So let's call it 1. And so this is again a little bit of advanced trading. And I will make another one called 2. So these are 2 area trades. So we'll see order. So I will say R2, let's say 28 and sell limit. Pick number 2, S2, buy limit. Done. Now it's pretty automated. So you don't really have to watch it. Yeah, you still, because Ninja can crash. My order doesn't come in. Anything can happen. I can't just say now I'm like automated like so. No. But still, now at least if I'm running in the house or doing something, when the price will go to 57.80, it will open my order, it will put my stop loss, it will put my TP, and it will cancel this. But if the price goes to this number, 56.10, it will open my TP, it will open my stop loss. So these are a configuration and normal trade. But then I can do other things in life. I can say, all right, I want to watch a TikTok or a cat video, things like that. So these are called area trades. Area trades users generally are the last users in our organizations when they have learned everything. If I ask you large triggers you don't know, I don't recommend you to do this because this doesn't teach you nothing. This just teaches you, hey, if price goes here, sell. If the price goes here, buy.
How does this happen is your struggle to get there, right? Yes, this is, but in here, computer has said, look, this chart has nothing in it except price. But if you don't know what a mid band is, you're going to struggle here, right? You don't know when to exit, when to enter, right? So that's why 15-10 green, buy, 30-20, sell, right? Slowly. But once you get there, the life is so easy. But problem is it's 10:30 right now. This could happen at 4 p.m. This could happen at 3 p.m. So it may not happen. So those that are trading areas are just simply sleeping there and waiting for the price, because I have a lot of people who have jobs full time, morning jobs. So that's what they're trading. They're saying, hey, we just care about support and resistance levels. We don't care about mid, because what you guys at the beginning are doing are learning to use the system. What is mid band? What is large triggers, RSI, things like that, right? So, and eventually, and your goal is $100 a day. Mostly goal here is $1,000 to $2,000 a day, because the price will travel from here to here or here to here. So we are not after at least 1 or 2 points. We're after 5 to 15 points. So when Nasdaq moves, it can give you 50 points, right? So if you wait more, you get paid more. If you wait less, you're in a trade, mid band, out $50, done, right? So that's a different approach. So yes, boss. Okay. Okay. His account is open? Okay, okay. No problem. Sit inside. I'll come after like some time to do this. हाँ चार्ट $1 $3 माइक्रो का और $6 मिनी का लेंगे बकाया कमीशन तो लेंगे मैं आपको आपका हो गया सर ईमेल ठीक है जी नो प्रॉब्लम सो कंप्यूटर में Going to go back to the then I will have you check it out. Thank you. क्या ऐसे थोड़ा ज़्यादा सब देख So in the areas won't pick up, right? The order won't pick up. No, it's just sitting until the price goes there. Why will it pick up? It's just an order. No, it's a price based. We are waiting for the price to go to whenever my look. Where did I place my orders? I have placed my orders 57. What's the price right now? 56.72. So why will it pick up order? And it can't pick up this. But once this picks up, it will open TPSL. When this picks up, it will open TPSL and it will cancel everything else. So hopefully we'll get there. So I don't know when, but right now price is stuck right in between R1 and S1. So maybe the first attempt would be R1 and then the next attempt would be S1. These are the safest type of trades, meaning computer predicted, we go there, you sit there, and then you sit and sit and sit. So this is the limit for the everyday different. Different every day. Every day. Yes, different every day. हाँ जी नहीं मैंने देखा नहीं मैं रियली एनी टेस्ट कर रहा हूँ मैं सारी इसके अगर आपने बनाए तो गुड जी जी
नहीं हो सकती है। मुझे सिर्फ है कि वो चौधरी उधर उठ गया ना 10 बजे सो के बेड से, तो ये ब्रेक हो गई तो हमारा स्टॉप लॉस जनरली R1 S1 पे होता रुकता नहीं है। तो ट्रम्प को कहता हूँ कि वो आ गया तो एक लेवल से देखिए, आप यहाँ से भी ले सकती हैं R1 से और किसी भी नंबर से, लेकिन हमारी पिछले 3 हफ्ते से क्या आ रही है कि वो जाती है थोड़ी सी और R1 ब्रेक कर देती है और इधर आती है, तो सेफ नंबर फिर ये वाले आ रहे हैं। तो हाँ जी, जी सर, अपनी ईमेल जाके कंफर्म द बटन दबाना कि आई हैव हो गया जी, कंफर्म हो गया, फिर लॉग इन कर लें जी। So I have 0 orders so far, by the way। मैं क्योंकि एरिया ट्रेड में हूँ, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया अभी तक। कल रात को मार्केट खुली थी, 240 से बाहर था, मैंने अपना FTMO सेल कर दिया था एंड सुबह उठा तो वो एक चंक बना हुआ था, राइट। सो क्योंकि वो आप ट्रेड होल्ड कर सकते हैं बेशक पूरा उम्र, वो वाली कंपनी है, राइट। सो उसको फ्लोटिंग बैलेंस भी कहते हैं। तो Chart trader, anyone. all right, so about 10 more minutes. When he's done, then I will explain you step by step. Account हो गया। When you are confident, you do it. It's not like I am doing it. ओके, सबसे सस्ता वाला लेंगे और ये इसका कोड डालते हैं अभी। ये डेमो का नंबर से चलेगा। ये सर फॉर्म भर दें। मिड बैंड 1-2 आए थे बस, 2 आए थे। ठीक, चलो। कुछ भी नहीं सिमुलेशन आपको फोन थोड़ी है
Anything ना ये तो इसका ग्रीनिश है No. डिस्क्रिप्शन कहाँ पे है? ये मैंने लिंक किया हुआ है सुपर ये पैसे हैं एक के पीछे नहीं गलत है पासवर्ड मुझे सही करना पड़ेगा। ये लॉगिन होना चाहिए आपको सिक्योरिटी पासवर्ड सही करना ये सारे करने ओके इसके बाद कर देता हूँ क्योंकि you- ये आप रूल लिख लें तो ये स्पेसिफिकली आप तीनों के लिए है, क्योंकि आप स्टेज 1 में जा रहे हैं। स्पेस डाल दीजिए पाजी वो क्योंकि आपके नाम के दरमियान में एक स्पेस है। The new users, this is eventually you will do this in about 2 months, maybe a month. Maybe I think your dad is doing it already. But once you know how to trade, you will get there. This really lecture is for these three, well, in a month into it or 3 weeks into it, and they're ready to take a test. जब भी आप तीनों आए बल्कि सारे पहले ट्रेडोवेट खोलें बाद में निंजा खोलें। ट्रेडोवेट की जो विंडो है ना जो इतनी क्रिटिकल है, फोन पे हो कुछ भी होगा ना निंजा में तो ट्रेडोवेट बचा जाएगा। कई दफा आपको होता है कि आप प्लस में है पता नहीं है प्लस में है, ब्लाइंड हो जाता है। इट्स लाइक फॉग आ जाती है ना निंजा। फर्क पड़ गया निंजा पे ना जब से बिकॉज़ वो रियल मार्केट डेटा है, सिम का डेटा नहीं है, राइट? सो क्या मैं ट्रेडो और स्पेशली यहाँ पर अबाउट 50 to 60 यूजर साइन अप हो रहे होते हैं,
जितना आप अर्ली आएंगे आपका निंजा, वरना फिर आके it will say, oh, like do this captcha, and then eventually you need hotspot, right? So if you show up around 9 o'clock, you have no problem logging in. But the more users that come in, eventually. Take it. Five, 3, 0. Five, 3, 0. It's if you sold at mid-band, you got your 2 points. If you sold it top of the bar, you got your 2 points. Price came to 56.72. You had a sell limit order. Your price came down, gave you 2 points. You're done. So at the beginning, keep putting in an order. Doesn't matter profit, loss, profit. The more you will practice taking an entry, the better you will get at it. So when the price was coming to mid-band, you entered 56.72. Price went down to 70, closed the trade, $100. But in this case, trailing just stopped at $50 because it didn't, keep going down. Perfect. That's all it takes. If you start to consistently make $100 a day, you will get to 10,000 a month very quickly. मैं तो सिम में चले जा अभी आप खड़े हो जाए तो सिम में चले होने लगा आज तक नहीं हुआ कुछ अभी से Because that अभी आपको मैंने बताया कि आपने कौन सी वीडियोस देखनी है उसको इनेबल करने के लिए सेम चीज का इसका आ रहा है मेरा नहीं आपने फिर नहीं किया होगा दिखाएं नहीं दिखाएं नहीं हाँ दिखाएं मुझे माउस यहाँ पे ये है चार्ट ट्रेडर ऑन यहाँ अपना अकाउंट सेलेक्ट करें अब आ रहा है ना एक सेकेंड किसी भी चार्ट पे नहीं आ रहा है मेरे पास सिमुलेशन भी ऐड नहीं हो रहा समथिंग इज आप कैसे कनेक्टेड हैं इस वक्त कनेक्टेड कौन सी मार्केट से लेकिन कौन से अकाउंट से ओके मैं सेट करवाता हूँ या
आएगा नहीं आएगा इधर नहीं आ गया सर ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਲੈਜੈਂਡ ਦਾ। ये मैंने घर से बैठ के भेजा तो इतने वैसे जो 3-4 प्लस भी फाइन ही नहीं देखो काउंटिंग आया हो गया वहाँ कनेक्शंस में जाएं भेज हम है ही नहीं डिसेबल हुआ इसको कोई ऑप्शन डिस्कनेक्ट करके सेम कुछ भी वो दूसरे दिखाई है बाकी को वो दिखा नहीं रहा मेबी रीलोड करना पड़ेगा सारा 5 अगर 5 निकल गया R2 से ऊपर लिमिट से तो मैं ट्रेड में नहीं बैठा। 57-30 है ना, अगर 35 हो गया 40 हो गया 50, आपने कहीं ना कहीं तो रुकना है ना, तो 5 पॉइंट मैक्सिमम। काफी है ना ऑनलाइन सर नाम के अंदर स्पेस नहीं डालें। ये थर्ड वीक एक और ऊपर बॉक्स होगा। All right, price is coming towards R1, guys. So those looking at areas for ES, R1. मैं तो R2 पे बैठा हूँ, अब देखिए, लेकिन R1 की रेंज शुरू हो रही है 93 से। Those who want to take area for R1, 93, 7 पॉइंट का फर्क है। If you sat on a mid band, went back up, you're done. And bottom of the bar 30-20 is done. 2 points. Maximum. Maximum button. 32 का 32 So maximum ball. I think we have to sell on the yeah. I'm trying so
Yeah. Realize clearly cutting the commission. You have to go to that. जब वो बोलता तो मैं like this. Right? जी नहीं, हॉटस्पॉट से करें। यहाँ 50 यूजर्स एक ही तरफ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन करें और फिर कनेक्ट करें, तो इस वजह से वो मसला आ रहा है। अभी ये गैप बोल रहा है 30 more seconds and इसके बाद मैं आपका निंजा बंद करूंगा, आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे और आएंगे, ताकि आपका भी कनेक्ट हो जाएगा। माय लेजेंड्स, easier for me to come here. Have a seat, have a seat. I ask everybody, I move better than you disconnect. अब आप हॉटस्पॉट से कनेक्ट करें और मैं आपको सारा गाइड कर देता हूँ व्हाट टू डू। Double divergence on 1510. तो डाइवर्जन में मिड बैंड की ट्रेड नहीं डाली, रिस्की हो जाती है 1510, स्पेशली 30-20 में डाइवर्जेंस की लाइन आए तो आपको नहीं करना है। घर जा रहा 3 पॉइंट बनाने घर जा रहा माइनस। All right, so for those that have gone into the first day of test, at least 3 of you and now congratulations. So it means you've been practicing for about a month, give or take, and you feel that you're ready to make at least $100 to $200 a day. Please stick to that. If you've been doing this, the moment you start to get a bit greedy, things will fall apart very quickly. So day 1 today, your account, sorry, this projector will come. This is, I think, is the perfect. So, no problem. So today is May 5th, 2025. I've repeated this thousands of times, so I know it by heart, everything what needs to be done. So any questions, this is the time you ask, meaning that otherwise, oh, I didn't know this rule. So on June 4th, 2025, you will get charged another $50. What the agreement you signed is a subscription-based model that I'll explain you the reason. Some people sign up for a bigger account. They don't want to just finish it in 30 days. They want to take 2 months, 3 months, 4 months to do it but this account will get recharged $50 until you cancel it, right? So what is your goal now? If you see Trade-O-Wait, which I open, what is Trade-O-Wait? It's like it is a broker and a platform. So they allow you to connect. Legends is a company prop firm. It's a funded company. Trade-O-Wait is a broker and the software provider, and that gives you all the access. You want to know how much commission is? Go to Trade-O-Wait.
You want to know anything to do with your account, Tradeovate has supplied you with an account. So you log into Tradeovate, you have ledgers, you can say, when did I exit? When did I enter? So everything is recorded on Tradeovate, not on Ninja, nothing on Legends. Tradeovate is the website you open. So now if you see, I have configured your account. When you log in, I removed all the noise. It just says 25,000 and 1,500. So that number, 25,000, is a fictitious number. That's not the money you have. You want to turn that number into 26,500. Okay. And the 1,500, and you see on the right, that's the money your account will get blown. If बल्कि आपके लिए भी ठीक है, आपने Friday को sign किया ना, तो ये आपके लिए perfect. So 25,000. So first things first, you sit down, open Tradeovate. Because what will happen is you will go into Ninja, you'll start trading, things are going, you didn't know about news and it shot up or shot down and you can't close it. If you have an iPhone, download Tradeovate app on your phone. Remember I asked everybody to take a picture of that username password? That's what you log in using on Tradeovate. That's your Legends username and password. What is your goal of this test? You have 30 days, but really 20 days. Not because you have weekends and market is closed. In 30 days, make 1,500 and don't lose 1,500. That's all the test is. And you cannot complete this test faster than 5 days. If you're very aggressive, you are taking multi-lots, whatever you're doing, and you know I can take $400 to $500 a day, there is a limit for you. You cannot cross more than 450 in a day because they want to see you 5 days of your emotional. Someday you're upset with your kids. Someday you have, somebody cut you off and then you come in, you're happy. Someday you are in the revenge trading mode. Someday you didn't even care about the news, right? So 5 days will establish a good trend for you, right? So please, I know it's 5 o'clock, but I write 4:30. Go on Tradeovate, right click, cancel everything. Meaning on the account, if you right click everybody, it will say close your orders, close your account, like flatten everything. So at 4:30, make sure there's no trade going in and out, because what will happen is if they close your trade, doesn't matter positive or negative, they'll kill your account. So it is very critical with this company to make sure your trades are closed at 4:30. Right? So Tradeovate, वो जो उस दिन हमने login करके website bookmark की है ना, वो Tradeovate. So this is what you have to do. So if you are a reasonable trader, meaning that you keep it within a couple of $100 a day, this is done in less than 10 days. Because you only have to make $150 a day in 10 days, and you pass the exam, and then so the outcome of this test, there are 3 possibilities. You will either fail the test, it's okay if you fail it. Now, why do I put you guys through this? It's not that I don't care. I say on the radio is I don't care if you work at Tim Hortons or you own Tim Hortons. Your bank balance is yours, but I like to make sure that you don't lose any money. If you feel qualified and you put in how much money you need to go and put it into your own account, around $2,000-3,000 or $5,000 to open a real futures account. But why not learn it and fall and go up and down at a much less cost of $50? What that means, if you fail, you have lost $1,500, technically, theoretically speaking. So your goal is make 15, don't lose 15. You have 30 days to complete, 5 days minimum. So this is the test. One outcome is you passed it. Congratulations, you will get a signature. You will get that we will hire you as a trader. Legends will say, Perdia will say, Take Profit will say, these are, when I say EA, that means you're doing stage 1. They call it apprentice. Apex calls it EA. Legends calls it different. So basically, these are stage 1 tests. If you fail, I wrote, you have to repeat it. You have to go back, pay another $50, sit in again, and send conditions, start again. So
You can fail 10 times, pay 10 times 50, 500 times, well, which means you have lost $15,000, technically speaking. If you pass after the fastest you can pass is 5 days, you can move into the stage 2, the real stage, the real money-making stage. And the last thing is rollover. Okay, you made $1,200 and you got sick, or you had a wedding to go to, or you had a trip planned, and you didn't continue trading. So in 1 month, so let's say June 1st comes and you only have made $1,200. They will charge you 50 again, and they will roll over. So they do roll over. So it's not a stress that, hey, I must complete it in 1 month. But the idea is you don't want to take more than a month on a smaller account. It needs to roll over. So it will carry everything over. So it will carry 1,200 over. It will carry whatever balance you have available over. Now, rollover is critical to see, because what happens is some users will roll over, but they have $100 left into the threshold. So that's wrong too. So if you have no balance left, if you only have $100 available to trade, kill the account. Like, there's no reason to roll over. You're not gonna be able to make so much money from $100, right? You'll be paying the same fee. Exactly. So kill the account, sit back in a new account. It's better. So yeah. So okay. So what happens is, in one scenario is you have your full $1,500 available, and you have made $800-900. Yes, it makes sense to roll over. However, you only have $300 left, and you have like nothing you have made. So cancel the account and sit back in the exam. If you're not made anything, how do you have $300 left? Sorry? If you're not able to make anything. No. What I meant was you traded something and your 1,500 turned out to be $300. You have lost $1,200. Then kill it. And So- when you said roll over, means $1,200 Will carry over. will have to go for 3 months. Yes, correct. But that's a positive scenario. If you are in a negative scenario and you have only $200 left in your account, in terms of loss taking, they will roll that over too. And then now you have to make like almost $2,700 because to cover it all up, right? So it's not making sense. I have one question. Yes. So if we make the 1,500, that will be some portion come to our account or not? Zero. Zero. At stage 1, zero. Zero. For $50, they're not even gonna give you anything. Like, they'll just give you a certificate that we want to hire you. So you do get some dopamine in your mind that, hey, I feel like a trader. Like, hey, I get. So थोड़ा सा appreciation आपको देंगे कि आप एक ट्रेडर हो, वेबसाइट पे लगा देंगे कि so and so ने पास किया एग्जाम. So it's a good effect that, hey, I managed to only invest $15 and I made $1,500. So it's a good feeling in that case, right? So this is how, yes. Set up ATM as 820. Yeah. So like sometimes I place the order, I scared of it. Okay. So can I reduce to? You can reduce. You said minimum it should be there. There is no minimum. It's up to you. You can take 20 is the maximum. But problem is sometimes it comes to 13 and then shoot back up. What you gonna do, right? So No. Like I can play with the mouse. yeah, you can close the trade. 50 cents, like 50 cents means like 0.25 Yes. $12. Yeah, so correct. So if I got to 0.5, Yes. can I You can close the trade yourself, no problem. How you trade, they don't care. Oh. They want to just see, make sure. Maybe the other stage 2 you told like. Yeah, you gotta go. I will switch you into micros, Yeah. smaller one. So The limit is, only here, sorry, the limit is 450. 450 maximum in 1 day. Now let me explain you quickly what happens where most people get caught. So today they make $100, or let's say $150. First of all, your limit of losing doesn't increase. That would stay, because that 1,500 won't go up. So any money you make today, tomorrow it doesn't count. So as you build your thing, your maximum loss stays at 1,500. It's not like, oh, people say I have 20 this left. No, you're gonna watch this number. 1,500 number is what you have to watch. So
What happened if somebody made 500 a day? Just lose it at $50. Just otherwise they'll raise the target. So if you make more, you're like, all right, I made $1,000. And then I'm feeling like, so what they say, all right, you're a good trader. Now your target is 3,000. So they raise your targets. So that's all they do. So that's why it's called the consistency rule. They have a 30% consistency, which is 450. If you made like 1,000, your target goes from 1,500 to 3,000, right? So that's how it works. So whatever you make today, we'll be able to pass on tomorrow, right? So no, so you start again tomorrow. If you lost, yes, you have a less amount in your account. But if you made money, you don't get more than 1,500. So tomorrow comes and you lost 150. Of course, now you only have 1,350 available, right? So third day starts, you only starts with 1,350. We just have to get to 1,500. Yes, $1,500 आपका 25,000 वाला अकाउंट 26,500 हो गया और 5 दिन हो गए और 450 से ज्यादा नहीं हुआ आपको 3 रियली रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है 450 से ज्यादा ना कमाएं और 5 दिन के अंदर कमा लें आप पास हो जाते हैं I know it sounds good on paper. They only take on total PNL, not gross. No, realized. They go after realized. Yeah. Any questions here? This video is recorded. It is gone online on our channel. So if at that time you can go in and Suppose 450. 450. I can make $100. Yeah, no problem. $50, $20, whatever you like. They don't care. You 50 can, days you have maximum. but you have to make some money. Like at least make 150, so you can finish your test in 15 days or 10 days, right? So Next day. नहीं वो कैरी ओवर ऐसे इसमें नहीं होता आपका टारगेट कम हो रहा है ना देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपका टारगेट कम हो रहा है तो आप टारगेट के करीब जा रहे हैं ना तो मैं आपको कैसी है एग्जांपल दूं कि आपने एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है ठीक है 25,000 से शुरू है यहाँ 26,500 है आपका जो फ्यूल टैंक है वो सिर्फ 1,500 कैरी करता है आप जितना बर्न करोगे तो वो मैक्स 1,500 ही रहेगा आपने आज 450 बना लिया ये नहीं हुआ कि कल आप 1,900 लूज कर सकते हो ये नहीं होता राइट सो लूज आप 1,500 ही कर सकते हैं यस एग्जैक्टली in a day, in a day we did the 3 trades. yes 450 maximum. I do the one is the my negative, Yes. other 2 are the positive. then the threshold comes back yeah so if you look you lost money here it went down but other day you made $200 again Positive. so they push you back Okay. they're not gonna give you 200 क्योंकि maximum 1,500 है ना तो आपको एक ऑफर देते रहते हैं so this is how by the way R1 is inside we are inside R1 very close to your area मैंने लिया 5, 6, 8 अच्छा ये सच है R1 के पास है तो हमारा टोटल प्राइस आपका ये देखिए ये ग्रीन का मिडबैंड ये ग्रीन का ये ऊपर चला गया हाँ जी इसमें एरिया नहीं दिखा रहा है कैंडल वाले में इसमें हाँ जैसे सारा आपका एक्चुअली मैंने वो स्क्रीन में इसलिए Yeah, because this one start. लिया मैं कभी एरिया जो ट्रेड कर रहे हैं कहाँ पे हमारा पीछे चल रहा है हॉटस्पॉट पीछे चल रहा है हाँ यही चक्कर हो रहा है हमारा वाईफाई स्लो चल रहा है ये भी पॉसिबल हाँ हॉटस्पॉट भी नहीं आपने इसमें जाओ फोन पे आपको करना पड़ेगा तो अपने फोन का इंटरनेट है हाँ, वो डेटा के साथ। इनका आ गया है डेटा के साथ है ना Stay account only computer में.
मैं कम दे आईफोन पे डाउनलोड करो हॉटस्पॉट के कनेक्शन में जाके हॉटस्पॉट करके ऑन कर ये तो दिख नहीं रहा है ना आपका ये रहा पासवर्ड आपका पासवर्ड थोड़ा इजी लग जाएगा हाँ आपका हॉटस्पॉट का और नहीं ऑन है अब जब आपको याद है माशाल्लाह घर जाओ ठीक है ज़्यादा इधर आके आप रोज बताओ आप पहले तो करते होंगे ना आप पहले भी करते होंगे सीख कर लेकिन आप वो पहले वो जाके करके फिर बाद में देखते हैं आपका लाइफ डिले हो जाता है इसलिए अब चेंज कर दिया क्या वीडियो चार्ज करना पड़ेगा देखना पड़ेगा आपका फोन सुना अब वो पासवर्ड डालो देखो मेरा भी कनेक्ट हो गया अभी प्राइस ठीक हुई मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं दोबारा मुझे लॉगिन कर सकते हो जरा प्लीज ये मैं नेगेटिव ना किया वो मेरी ट्रेड चल रही है थैंक यू वेरी मच नहीं हो रहा हो गया ये कब हुआ लेकिन इसको चेंज कर लो ये हॉटस्पॉट का चक्कर रखता बंद कर दोबारा खोल ये हॉटस्पॉट ही करना पड़ेगा अपने वाले बहुत सारे लोग अच्छा अनलिमिटेड इंटरनेट है भाई आपका क्या नाम है आलिया अभी देखो हुआ आपका और मेरा सेम हुई प्राइस चार्ट 85.75 86 अभी है 86 है 8678 अभी 86.50 5678 86 लाइफ है ना चेंज हो रहा है हाँ टाइम के बाद आपका स्लो मूव हो रहा है प्राइस केम टू मिड बैंड अनदर लो ऑफ द बार एवरीथिंग हाँ जी हाँ जी कर दें इसको एंड सिमुलेशन मेरा एटीएम काम नहीं अपने सेटअप सही नहीं किया होगा so price came to mid band gave you a couple of points right there right so congratulations तो जो ये कर रहे हैं ना एक तो नंबर 1 किसी के साथ शेयर ना करें मैं आपको बता रहा हूँ किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे नहीं मैं बता रहा हूँ ठीक है जो आपकी स्ट्रैटेजी है करते जाएं और इससे दैट्स इट आप एक दिन होगा निकल जाएंगे क्योंकि कई दफ़ा होता है कि ट्रेडर नेक्स्ट लेफ्ट और राइट जस्ट सेइंग इज नॉट डूइंग सो वेल एंड देन दे आर लाइक हाउ कैन आई डू इट राइट सो मैं कह रहा हूँ अपने पे फोकस रखें आपका ये टारगेट है डन डिस्क्रीटली यू कैन आस्क मी स्टिल possibly but avoid sharing because sometimes people are going through different stages नहीं देखें आपके लिए 150 कमाना आसान था कहीं के लिए $50 मुश्किल हुआ होता है राइट सो just encourage no it is fine that so it means whatever he is doing he took this mid band took 2-3 points done right so 150 is done so idea is to stop करना है 150 के बाद स्लो हो जाए प्लीज कुछ भी नहीं बस कल आए सुबह शुरू वही और नो करना है that's it
trade of it also just sign in. Correct. Sign up, right? Or close it. Correct. If you don't mind, you can check it. ATM why not working? सर आपकी एटीएम एक से मैं इनसे करवाता हूँ, इनकी एटीएम चेक कर देंगे, ये फेवर कर दें। थोड़ा छोटा कर दो, इसमें क्लिक कर ली कौन सा अकाउंट है ये। R1 I think it went too close in my opinion. हम बहुत ऊपर देना, जल्दी से आगे वापस। लेकिन आपने लिए नहीं 150 सर, फिर आपका अकाउंट हो, वो उन्होंने 3 पॉइंट लिए, बंद करके लैपटॉप ही बंद कर दिया, और आपने +1। अच्छा, ये राउंड 2 में आपको तंग करेगा, पता क्या, अगर आपने 150 देखा और 0 पे बंद किया, वो 150 थ्रेशोल्ड से काट लेंगे। ये सारी फंडेड कंपनियां कहती है कि बंदे ने ग्रीड की भी सजा है स्टेज 2 में, स्टेज 1 में नहीं है, स्टेज 2 में ग्रीड की सजा है। आपने मिड बैंड लिया, आपने 150 देखे, आपने नहीं बंद किया, उन्होंने जब ट्रेड बंद किया तो वो आपका लॉस 150 प्लस से काउंट करेंगे। ये सारी फंडेड कंपनियां हैं, वो कहती हैं एक बंदा है, उसको परवाह ही नहीं है कि उसने 150 देखे लिए नहीं, तो वो आपको इस स्टेज में नहीं, उन्होंने 150 लिए, बंद करके कंप्यूटर बंद कर दिया। आपने 150, आप दोनों ने 150 देखे, उनका तो अभी चला ही नहीं, आपने 150 देखे, आपने नहीं लिया। अब ये फर्क है, अब स्टेज 2 में आपको ये मारेगा। तो ठीक है सर, अब जाएगा, लेकिन लॉक कर दे, उसमें से 50 लॉक कर दे। नहीं वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड। मेरा सिर्फ ये है कि यहाँ आज अभी आपको आपने 0 पे बंद किया ना, तो 0 ही मिला ना, ट्रेड हो। जो स्टेज 2 में जब आपने 150 देख लिया है ना, और इमेजिन करें -150 हो, जनरली नुकसान कितने का, 150 का, उन्होंने आपके 300 काटने, और आप कहोगे यार ये क्या हो गया। नहीं देखिए, आपने ब्रेक इवन पे बंद किया, आपने यहाँ से स्टॉप लेवल ज्यादा रखा, आपने 150 प्लस देखा, $100 से बना रहा है, ज्यादा नहीं लगा ऐसा रखो बोला या आपने हम कुछ नहीं करने का, वो अपने आप ही करेगा। इन्होंने आपको सजा दी थी, अपने आप ही करेगा, अपने आप ही करेगा। लेकिन हमारा क्या है, ये ग्रीन है, ग्रीन है, ये रेट है, ये रेट है, एक विंडो खुलना पड़ा जो ये है ना, ये विंडो खोलना पड़ेगा। मैं सामने बोला जहाँ से भी पॉजिटिव शुरू, if you are comfortable with this, you do this, बट यहाँ से 50 से कट this सीखो आप। ये अच्छा है, सामने चार्ट टेक्स्ट इसको क्रॉस कर दो, इसको रख दिया था नहीं, किसी को क्रॉस नहीं करना अभी भी, मिनिमम पर, और इसको एक्सटेंड करो, नहीं एक्सटेंड करो ऐसा। उन्होंने 150 पे कहा भाई आई एम डन फॉर द डे, आपने कहा नहीं यार मैंने ऊपर जाना है, उन्होंने क्या कहा अच्छा ठीक है, आज उन्होंने माफ कर दिया। स्टेज 2 पे सारी कंपनियां बहुत सख्त है, वो कहती हैं एक पर्सन है उसको अपने एग्जिट का नहीं पता, मैंने एक पॉइंट क्रेडिट में से 2 लेने हैं, 3 पॉइंट बड़े पॉइंट होते हैं वैसे। एनीवे जस्ट आपने आज ही स्टेज 2 में अभी नहीं करेगी क्योंकि मसला ज्यादा होगा, आपने शुरू हो गया, आपने अभी पे नहीं बना, इसको बाई बीट वो माइनस आपको कैसे करते हैं? पर का साइन आ गया, पर का एरो साइन आ गया, ऊपर जाएगा। थोड़ी देर रुको, 3 कैंडल तक बाद में डिसाइड, क्योंकि उन्होंने कहा लेकिन इसमें आपको बाई बीट करते हो क्लोज नीचे क्लोज नहीं करना, अपने आप ही क्लोज अभी नहीं है, अपने आप क्लोज हो जाएगा। मैं इसको नीचे कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका ये नीचे आ रहा है, आयान ये देखिए, जब मैंने ऐसे हो गया जैसे पहले मैंने हो रहा है ना, इवन स्टेज 2 में सेटिंग गलत है। हाँ वो आई डोंट नो, मुझे लगता है नो इट्स ओके हैं, नहीं it should be like this. आपको तो ये हेडेक्स ही नहीं, ये सारे होते हैं स्टेज 2 के थ्रेशोल्ड तक,
हाँ जी हाँ जी उसका जस्ट नॉर्मल साइड नोट लाइक हाँ बस राइट यस 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 करेक्ट ये वाला अकाउंट उड़ जाएगा नहीं 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 बस अब मैं आपको बताऊं राइट क्लिक करें उस अकाउंट पे सिर्फ गाइड कर दो राइट क्लिक करें उस अकाउंट पे ट्रेडर वेट के अंदर बंद करना पड़ेगा किस पे Like ड्रॉप डाउन मोड है ड्रॉप डाउन drop down. क्लिक करें और कोई चीज खुली नहीं नहीं बैठे बैठे मैं आप देखिए मुझे एनी डेस्क दिया करें इस अकाउंट पे राइट क्लिक करें अकाउंट के ऊपर आपका अकाउंट नेम सिंक किए इस पे अकाउंट नेम पे है हाँ राइट क्लिक कैंसल ऑल ऑर्डर्स अगला 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 ये वाला यस यस तो आप ये क्या कर रहे हैं हर चीज फिनिश कर रहे हैं सेटिंग नहीं अपने में क्या है एफडी में तुरंत देखिए ये मेरा लिखा हुआ है एमडी मैक्स प्राइम ये है आपका वो आपका लगा exist all ये ना positions when cancel. Audio is fine. Audio is working. ये ओपन करके जान ओपन कर लेंगे उसके बाद ही इसका कुछ भी नहीं क्या? ये उनका क्या है आपका ये सेलेक्ट हुआ ये मेरा एक बार यही है MD Max Prime. टुमारो आई कैन ओपन दैट अकाउंट टुमारो Tomorrow कर लें no problem. इसको मैं चेक अपडेट करें आपकी बहुत आज अपडेट कर रहा हूँ इसको आपके पास कौन सा है जैसे हमारा होना चाहिए लाइन फ्लो ये मेरा वाला आया हुआ ट्रेडर वेट डाटा ट्रेडर वेट ये गलत ये ना ये लाइन है ये वाली आई है Oh, candles idea. हाँ it should be ट्रेडर वेट मैं आया वेट को दीजिए वेट So I think आपकी ये आपका कौन सा चल रहा है मेरा ना ये किस पे टिक किया हुआ है no you want enough indicators. मैं बॉटम ऑफ द मार्केट करता हूँ Indicators. ये तो तो सब कुछ ही सेट हो ये ये आ गया get let's show ये आ गया क्यों नहीं आ रही बुद्धि करवाना आप अभी वेट 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 इट्स स्टिल हो जाए green it's Green. still green चार्ट मुझे लगता है चार्ट में कुछ है ना कैलकुलेट इधर भी आप है All right, for the new users now, let's do the quick. आपके लिए मैं शो करके तो फिर identified link हम ये ना पेमेंट करो ये चीज को भी आपका 30 मिनट्स में मेरा ये एमटी मैक्स टाइम इधर को देखिए एमटी मैक्स टाइम ये तो इंडिकेटर्स हैं वो मुझे लगता है चार्ट chart setting is है ना हाँ इनमें से कुछ एक setting और ये ऑटो में है ऑटो से हुआ है जैसे भी यहाँ भी हो सकता है ये डॉट डॉट करके देगा यहाँ से मैं आया था इससे आए ड्रॉप डाउन में ये वाला आपका ड्रॉप डाउन ऊपर चला गया ये इसी में यार ये हाँ ये कैंडल स्टिक की जगह पार कर देते बॉक्स करके चेंज करें अलग अलग को बदल आपका दिन नहीं मैं तो न्यू यूजर्स को ओरिएंटेशन देने लगा मैंने 3 पॉइंट ले भी लिए हैं आप कहते हैं जस्ट किडिंग हाँ जी हाँ जी
वो देख लें लास्ट सर वो हॉटस्पॉट तो नहीं करोगे क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੰਜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹ वो भी है ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ 1510 was an SRES and these candles are messed up right now. तो देखें यहाँ बाहर है बाहर Okay then. Thank you, sir. आप भी करें बाहर Thank you. Thank you, sir. Base जहाँ लिखा वो डाटा बेस्ड ऑन बार्स क्या ना हाँ ये करें अब सही हो जाएगा बार्स 300 करते हैं बार्स ये हाँ ठीक है डिफॉल्ट में 24/7 और डेट आपकी सही इसी को अप्लाई करें हो रहा है आपने कुछ और इंडिकेटर ऑन ऑन ये आपकी काफी चीजें आप लोगों की अभी बिल्कुल डेमो में हैं तो तीनों के हाँ निकल डाटा सीरीज के अंदर अभी नहीं बोला ये एक ऑप्शन है जो आपको सबका हमने ऑन कर दिया सॉफ्टवेयर को यूज करना ओके आपको सही रहेगा गलत तो नहीं जा रहा नहीं आपको देखिए डिफरेंट लिखा था फिर ध्यान वाला इसकी हो जाएगी ये छोटा बनेगा हाँ नहीं बुलिश के ना दोनों सटिंग will be something Another time R1 is about to touch on ES. Yeah. 30-20 will have a divergence soon. 30-20 में divergence बन रही है जी. Yes, में 30-20 में प्राइस हायर हाई पे गई है, लेकिन आपकी हाँ उसी कैंडल पे फंसे हैं. सही नीचे जो डीबीज हैं वो ब्लैक डॉट नीचे जा रहे हैं हाँ तो अभी ऊपर वाइट लाइन बन जाएगी अभी थोड़ी देर बाद. यहाँ पर जिन्होंने ओरिएंटेशन लेनी है, आई थिंक ही इज गॉन, बट इट्स ओके, आई विल स्टार्ट राइट नाउ, कांट वेट. इनमें से आपको कुछ उठाना पड़ेगा. इसको उसको बड़ा करके हम इसको बोले बाद में इसको करेंगे. All right, finally into S1, slightly getting close. Sorry, my bad, R1. Nasdaq is quite a bit slow. So this is how you place a 30-20 bottom of the bar trade. So ये 15-10 वाला है ना. first I will set a stop loss of 14 ticks.
if bottom of the bar fails, black candle will appear after 14 ticks. Okay, and I would like to get 8 ticks out of the profit. So 2 point और 3.5 point का stop loss ये है मेरा इस trade के अंदर. So this trade is called retracement divergence 30-20 bottom of the bar. So the best ATM for this is 8 and 14. So let's call it 8-14. So that's done. Let me pick yes. Right now I see a divergence. This will fail because you see strength has not gone up on this trade at all. So you have a higher high, you have a higher high, you have a higher high, you have no higher high. So this bottom of the bar, there's more possibility it will fail. How would I place the trade? I went at the bottom of the 30-20 bar. I right click, I will do a buy limit. Done. My trade is done. My trade entry is done, not trade is done. So when so if you took this trade right here, you're done. If you even took here, you still did not hit a stop loss because the price didn't come down 8.5. So even though you took here, it went down. So right now it's about to pick me up, right? It's about to pick up my trade. I'm in. Let's see. So you can zoom in. So 30-20, and any second it is about to take my trade on a 30-20. Two possibilities will happen. I will not put ever this trade right now because of the strength. Because of it, look, I got picked up. Now it opened up my ATM of 8 ticks. It opened up my ATM of 14 ticks. I still have 1 tick out of it. 2 ticks I got. Let's see. But here, my probability is I will hit a stop loss because of my thing. But let's see. It still has it's given me 1 tick. So far, I've seen $25. So generally, because of divergence, the moment I will have a black candle, you will have a white line going to the top. That's called the divergence trade. So out of our system, this is the easiest trade. When SRES is confirmed, you take this trade. Look, it's about to hit a stop loss. Why? Because this no strength and my stop loss got hit. So I knew in advance my stop loss was hit. This is experience. Based on what? I even told you white line will come and it came, right? So you can see a lot of things. So now if I want to sell top of the bar, imagine I can sell this as a bit of a divergence. I will go right here and I will do a sell limit. That's it. So when you want to sell top of the bar, you will place your order sell limit on top of the bar. So now again, same ATM, 3.5 stop loss, 2 points profit. Divergence is there. I would like the price to go here and pick it. But if it doesn't pick up, no problem. You keep moving your order down and down and down. So this is called retracement divergence, where the price retraces, but none of the BBs retrace, none of the strength retraces. So the technical word is retracement. Easy to say, hey, bottom of the bar, top of the bar. So now right click and go to the 30-20, pick sim and pick top of the bar. Now in the last 3 weeks, impossible to do this because it is so volatile. This is normally done when there's easy, like slow, like you can actually click on it. 3-4 weeks ago when I started the free MBT program, things were fine. And 2 days into it, tariffs came, this came, that came. Whole month of NBT, no signal went. Because where am I supposed to click? I go here, changes to red, I go down. So we were playing only area trades. So we switch our strategy based on the market situation. But this is called the top of the bar trade. Right now it's wrong, by the way, because background color has to be red in order for me to do this trade. So my question is, how can we safely enter in the middle of where it is? no, the highest probability. It's never one thing you have to understand. In trading, there's no such thing called a safe trade. Okay. You just have to increase the probability that, okay, at what point I believe it's going to be the safest. So I take an entry. So once SRES is confirmed, your bottom of the bar trades and your first reversal.
So in this case, if you have, take a look at right here, you had a bottom of the bar around here. Right here, I can see one small tick right here. I let me zoom in. Yeah. So it means price came to the bottom of the bar, right? So you came to right here, you bought it. This was the first reversal in this whole thing. First time it came, you bought it here, you got your 2 points, you get out. So idea is when SRES is confirmed, the first reversal, first bottom of the bar is the highest probability. You can take every bottom of the bar, top of the bar, but then you will have less probability of hitting it, right? So meaning that, okay, I took this bottom of the bar, right? Right here, and I failed. Why? Because I didn't see the divergence. I didn't see the strength. So there's no, all you have to do is when SRES is confirmed, 30-20 bottom of the bar. When SR is confirmed to the top, 30-20 top of the bar. देखिए हमने 30-20 पे लगाया ना बॉटम ऑफ द बार, तो इस पे कंफर्मेशन चाहिए. सम यूजर क्या करेंगे, ट्रेंड चेंज होते ही बॉटम ऑफ द बार लगाना शुरू करते हैं. वो भी पॉसिबल है, लेकिन मैं मेरे लिए फेवरेट नहीं. अगर आपने यही ट्रेड, अब ये देखें दोबारा टॉप ऑफ द बार गया, फिर ट्रेड मेरा खुल गया, ठीक है. अब क्या चांस है, ये 2 टिक्स मिल गए मुझे, यहाँ से देखें. So after divergence, it went back up, top of the bar. Let's see how many I got so far. 3 ticks, 4 ticks, 5 ticks, 6 ticks. देखिए आपके पैसे top of the bar बन गए. इतना आसान. 6 ticks तो नजर आ गए थे मुझे. अब मैंने वहां पर लगाया ऑर्डर और देखिए 2 पॉइंट मिल गए मुझे. वो खुद मैंने नीचे जरा ज्यादा प्रॉफिट लगाया हुआ इधर. 2 पॉइंट आपके टॉप ऑफ द बार से निकालती है. आपने $112 तक नजर आ गया था मुझे. 137, 150, वो देखें $200 का ट्रेड बनाई है. सिर्फ टॉप ऑफ द बार से जाके सेल कर दिया और नीचे आया और खत्म हो गया. और 30-20 15-10 में अगर आप देखें, ये मिडिल ऑफ द बार था, मिड बैंड था वहां का. दोनों चार्ट्स में कितनी में से ट्रेड डाल सकते हैं? सजेशन देखें, बिगिनर्स में हम आपको क्या कहते हैं, 15-10 ग्रीन हो, 30-20 ग्रीन हो, 15-10 में चार्ट डालें. कई दफ़ा 15-10 बहुत तेज चल रहा होता है, तो आप 30-20 में आपके सामने मैंने आके ट्रेड डाला, टॉप ऑफ द बार सेल कर दिया, डाइवर्जेंस ट्रेड देखा, तो 3 पॉइंट देके निकल आ गया, राइट. स्पेशली 30-20 पे डाइवर्जेंस हो, चांसेस. अब उधर की क्यों मैंने सेल किया टॉप पे, क्योंकि डाइवर्जेंस थी, मुझे है कि इसने नीचे ही जाना है, राइट. ब्लैक कैंडल लग गई है, मैं उसको ट्रेल भी कर सकता था. ये 300-350 का ट्रेड था, राइट. सो एक अच्छा आपका सेटअप बन जाए, रेस्ट इज लिटरली वेरी वेरी. सेकंड चलें जी. आप अभी इस ट्रेड को कोई ना कोई तो ट्रेल कर रहा होगा. आई डोंट नो, somebody who entered on top. We sold right here. From here to here, the whole thing is 10 ticks or 20 ticks. 20 ticks times 5 is. नहीं, देखें, डिपेंड करता है. आप कहीं भी ट्रेड डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि मैंने निकलना कहाँ. अब इस केस में मैंने अगला ट्रेड डालना है ना टॉप ऑफ द बार, तो यहाँ पर जाके डालना है. ये देखें, ये मैंने सेल लिमिट लगा दी, नीचे जा रही है ना कैंडल, तो मैं शॉर्ट में रहूंगा. कहाँ से? यहाँ से, टॉप ऑफ द बार से. तो ये मेरा टॉप ऑफ द बार ट्रेड है. जब प्राइस यहाँ पर आएगी, मुझे एंटर कर देगी और मुझे नीचे ले आएगी. मेरी एटीएम सेट है,
14 to 4. What is my, let me double check my ATM again. Stop loss 8, profit 14. There you go. I will go and sell limit here. So two things will happen. I will have the price goes there, makes a black candle, hits my stop loss, 14 ticks. I've lost 3.5 points. Or it touches there, comes down, gives me a profit. So every trade has two outcomes. But what we are asking, background color is green, stay at the bottom of the candle. When you are, and of course the first reversal, जब पहली दफा trend change हो ना, अब देखें बार नीचे आ गया है. All I do is just pick this up and move this to the next bar. And you can do this easier on 1510 when the market is slow like this. Let's do this on a 1510. 1510 पे आपका stop loss different है. So let me close this. I will set an ATM. I will say, all right, my stop loss is 7 and my TP is 4. एक point लेना है जी मैंने. इसको मैं कर दूं 4 to 7. ठीक है. यहाँ पर मैंने लग दिया जी sell ask. ये top of the bar, let's say मैंने sell कर दिया. And it will pick my order right here at the top of the bar, sell limit. लग गई जी. So from here, all I care about is देखें $50 का फायदा है, एक टिक मिल गया मुझे, और मेरा stop loss होगा 7 ticks का, because it's the candle size is half. So if you're doing top of the bar or bottom of the bar on 1510, you want to take 1 point and you want to give away no more than 1.5 points, like 7 ticks. तो अब देखें $12 आ गए, $25 आ गए, तो 4 टिक्स जनरली टॉप ऑफ द बार से निकल जाते हैं. 37 आ गए और ये 50 पे खुद ही बंद हो जाएगा. लेट्स सी, पर 37 देख लिए थे हमने. 25 trend is down, so I'll stay in short. Done. $50. This is how simple it is. So I sold top of the bar, took my $50, put my stop loss, and I'm done my $50. 200 उधर से निकाले, 50 इधर से निकाले. इतनी स्लो मार्केट में टॉप ऑफ द बार सेल करी जाए, फिर अगली बार आए, फिर टॉप ऑफ द बार लगा दे. तो आपका स्टॉप लॉस कितना है? 7 टिक्स. उधर स्टॉप लॉस कितना है? 14 टिक. इससे ज्यादा नहीं. इन ऑल ऑफ अवर स्टफ ये सबसे कम स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है. 7 टिक्स और 14 टिक्स. 30-20 में 14 टिक्स है. 14 टिक्स का 4 टिक्स का प्रॉफिट. 1510 में 4 टिक्स लें, बाहर आ जाए ना, और दूसरे में 8 टिक्स लें क्योंकि कैंडल बड़ी है, राइट. सो 8 टिक्स लें, बाहर सब रिकॉर्ड हो रहा है सर. 1000. Once the black candle forms. Yes, so after. Yes. So once the arrow is supposed to say up. No, arrow changes. Right now the arrow is down. It says next black candle with the top side. So can we wait? Micro करें, mini करें, it doesn't matter. वो आपके lot size पे है. So can we wait until four lines and then we can? 100%. You can do anything, but it depends on the highest probability is when it confirm. Look, this is a SRES trade. इतना powerful trade है ये. Higher high लगी, higher low लगी, ये लगी, lower high लगी, और जिसने यहाँ से sell कर दिया था ना, वो देखें उस पूरे दिन का ट्रेड खत्म हो गया उसका. यहाँ पर आपको SRES की इतनी पावरफुल ट्रेड नजर आ रही है. हायर हाई लगी, देख आपको तो नजर आ, आपने तो लिया होगा, आई होप सो. नहीं वो ठीक है, लेकिन ये आप ढूंढ रहे थे ना, ये ट्रेड आपको एक मिल गई 1510 में, तो डेफिनेटली ये देखें कितनी स्पीड से आ रही है जी. सो दिस इज ऑल यू नीड इज दिस वन ट्रेड इन 1510 और 3020 के हायर हाई लगाया. ये डैनियल का लेक्चर 1 है, 1 hour 25 minutes के अंदर है. kind of shows you how to do this properly. Okay, I want to start, but then again somebody goes missing. No problem, it's fine. So this SRES trade, if I was to look at it, what's the possible, if they entered right here, if they sold right here, 84, they at least got up till 83, 1 point minimum, but 77. Oh, 84 to 77. So 7 points, 6 points, 5 points, 4 points, quite a bit in between.
So that was a beautiful SRES trade going down. So, what time we can expect, like, Sir. small graph, like 158, right? So it's showing 158 minus. So 158 minus के नहीं ये वाला ना, या वो वाला. So इधर चार्ट दिख रहा है ना आपको, minus 1.6. यहाँ यहाँ. हाँ ये तो बलिंज इसकी जो जितने नीचे आए हैं यहाँ तक सैचुरेटेड हो सर जीरो पे चला जाता है, जीरो पे ड्रैग रहता है, करता रहता है, जाता है वो देखिए जितने और सेलर आ गए और सेलर आ गए और सेलर आ गए, ये तो जीरो, ये तो मार्केट पे डिफरेंट. हमें ये पता लगता है कि ये जितनी ओवर सोल्ड होती जा रही है यहाँ से सेल ना करें, क्योंकि अब वेट करें, इसने रिट्रेस लेके ऊपर जाना है और फिर वापस आना है. तो जितनी ये ओवर सोल्ड हो रही है आपको एक इंडिकेशन मिल रही है कि यार मैं ये मिस कर दिया, ये यहाँ अगर मैंने 1 पॉइंट ना लिया होता ये मुझे 4 पॉइंट दे गए थे, राइट. सो दैट्स ए गुड क्राई. रोया मैं 50 पे रोया, ये तो नहीं है कि यार मैं और बैठा रहता, लेकिन तो मैं यही कहता हूँ हर 1 घंटे बाद आपको 1 पॉइंट मिल जाए, आप 3 घंटे में वैसे ही डन हो अपना एग्जाम. 3 पॉइंट चाहिए होते हैं यार आपको, मैंने कि $150 रोज का चाहिए, और आप $100 रोज के करोगे तो 10,000 पे पहुंच जाओगे. 5 अकाउंट्स हों टेक प्रॉफिट के, $500 रोज निकलता है यार, एवरी डे क्लीन साफ सुथरा यूएस, और 20 दिनों बाद $10,000 का वायर आ जाता है आपके अकाउंट में, कितने बनाए. लेकिन पहले देखें ना वो हुआ ना, ओवर बॉट हुआ, ओवर सोल्ड हुआ, और फिर थोड़ी अब रिट्रेस ले रहा है, राइट. सो मैक्सिमम इट्स 98. नहीं ना, देयर इज नो मैक्सिमम, वो 100 के ऊपर भी चला जाता है. देयर इज नो मैक्सिमम, देयर इज नो मिनिमम कि ये होगा जी वो. Person prediction is like after 93, 94. It gets overbought. Exactly. You're right. 100% right. Correct. देखिए मुझे आज कोई उस तरह ट्रेड मिल ही नहीं रहा. मैं एरिया पे बैठा हूँ, R1 से गई वो बेचारी, वो किधर 93 नंबर था, 92 से चली गई. क्या करें, नथिंग आई कैन डू. 1 पॉइंट से रह गए और उसने अच्छे खासे पॉइंट दिए, राइट. चले FTMO में तो मैंने थोड़े से ले लिए थे रात को, लेकिन क्या पता शाम को. हाँ जी हाँ जी. आप बता रहा था like 10, you can do 10 accounts. Yes. Possible, like ओ बहुत आसान. नहीं. एक दफा आपने आज लेजेंड का 1 अकाउंट लिया, ठीक है, आप लेजेंड के 10 अकाउंट ले सकते हैं एक वक्त में. तो जब आप एक क्लिक करेंगे ना, वो 10 अकाउंट में ट्रेड करेगा, वहीं से ट्रेड करेगा. एक कॉपियर का फंक्शन आता है, उसमें आपको काम देखें, एरिया तो एक दफा ही आना है ना, मिड बैंड भी एक दफा आना है. तो आपने एक में 50 बनाए और 10 अकाउंट हुए तो 500 बन गए. 2 वो जतिन भाई आते हैं जिन्होंने लास्ट टाइम लेक्चर दिया था, वो क्या करते हैं, माइक्रो ले लेते हैं, 3 माइक्रो नैस्डैक के, हर अकाउंट में 100 बनाया, 3 अकाउंट में $300 शाम को ले लिया. 300 रोज के आ रहे हैं, 20 दिन के 6,000 बन गए $. और काम कितना है, 90-70 मिनट का काम है एवरी डे, कोई इतना खास मसला भी नहीं है. लेकिन आज मैं उनसे पूछूंगा ट्रेड है, नहीं डाला भाई, एरिया पे नहीं आई, किस एरिया पे डालें. ना R1 आई, ना R2 आई, ना R3 आई, S1 भी नहीं आई, S2 भी नहीं है. तो अब लेकिन हो सकता है ये 2 बजे आए, हम 2 बजे सारे ट्रेड डाल देंगे. तो इट्स नॉट समथिंग के जो है ना. अब यहाँ पर SRES बन गया, देखें, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, पहला SRES बन रहा है ये स्विंग रीक. तो जैसे ही कैंडल कंफर्म होगी ऊपर की, कुछ लोग बाय करना शुरू कर देंगे हैं 15-10 में, या. लेकिन अभी मुझे मुश्किल लग रहा है यहाँ, क्योंकि नैस्डैक अभी जो है ना थोड़ा सा 30-20 अभी मिड बैंड से नीचे है, वो 30-20 सेलर टेरिटरी में है. ठीक, नहीं आपने बहुत सारी चेंजेस कर ली हैं, तो आप इसको बंद करें, नो करें और फिर दोबारा खोलें. नहीं फिर आपने करते हुए यस कर लिया था, मेरा ख्याल है. पूरा था, मैं उसको ठीक कर रही थी. और चलें एक दफ़ा आप डैनियल को देखेंगे, वो फिक्स कर देंगे आपके, ठीक है. तो नो प्रॉब्लम. बल्कि आप अभी देखिए आए, क्योंकि अभी ये नहीं आए तो ओरिएंटेशन अभी दे नहीं सकता. तो आप उनसे कहें कि मैंने कोई थोड़ा मैस अराउंड किया है, तो नहीं वो तो नॉर्मल है, आप यूज्ड टू हो जाएंगे. आप जो चेंजेस किया
जो चेंजेस अभी जो ऐड किया है No, you have to do every day. Those things you have to select. Go to the account and then ATM strategy. अभी अभी ऐसा कर लेता हूँ, छोड़ दो। इसमें जो ये है अभी मैं फिर से अभी कल आया समझो चार्ट हो गया, ओपन करके फिर से आप सेलेक्ट करना है अकाउंट कौन सा है, कौन सा है। सर ऐसे ही सेम वाला। सर ये देखें लोअर लो, ये SRES लाइव चल रहा है, ये लाइव चल रहा है। लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, तो SRES कंफर्म हो गया ना। आपको एक पॉइंट बकायदा मिल गया यहाँ से 4.75 से 5.25। देखिए एक और टिक गया और आपके SRES कंफर्म हो गया यहाँ पर। नहीं, यहाँ से पिछली 3 मूव्स देखें, जब ये चल रही थी मूव, ये लोअर लो बना, ठीक है, प्राइस वापस ऊपर गई लोअर हाई पे, बन के खत्म हो गया, आपका ट्रेड 1 पॉइंट मिल गया आपको। तो आपने ये देखा ना, जब हायर लो, तो आपको पता होना चाहिए अब यहाँ से ऊपर जानी है मार्केट। ऐसा नहीं होता नहीं होता ना, लेकिन जब ये कंफर्मेशन है तो आपका ट्रेड पक्का। हमने इस चीज का वेट करना है ना। बेशक जाए सर, आपका ट्रेड चला गया क्योंकि, लेकिन अभी 30-20 में ना SRES नहीं आई, 15-10 में आई है। देखिए अगर आपको ये आ गया 30-20 में, तो आप मिड बैंड से बाय करना शुरू कर देते हैं। आप डैनियल की वीडियो नंबर 1 दोबारा वॉच करें, उसके अंदर ये बिल्कुल फुल डिटेल्स है, स्टेप बाय स्टेप के SRES बनता कैसे। स्विंग, रिट्रेस, एक्सटेंशन, दिस फेल्ड, दिस बिकेम योर न्यू स्विंग। अब ये स्विंग में है हम। आपने जो बोला SRE कंफर्म हो जाए, फिर बॉटम ऑफ द बार, हाँ नहीं 30-20 कंफर्म हो जाए तो मिड बैंड कंफर्म होने शुरू हो जाते हैं 15-10 वाले। आप ऐसा करें, इजी मिड बैंड छोड़ें, बॉटम ऑफ द बार SRES के बाद लेना शुरू कर दें, वो ज्यादा बेहतर रहेंगे। या 30-20 भी आपने बॉटम ऑफ द बार 30-20 लेना है ना, तो उसको कंफर्म उधर हो लेने दें। जो लोग इस ट्रेड का पता कहाँ बैठे होते हैं, वो यहाँ जैसे यहाँ ब्लैक कैंडल लगती है ना, वो यहाँ पर बाई स्टॉप लगा के बैठे होते हैं और वहां से 1 पॉइंट लिया और बाहर आ गए। दैट्स इट। 30-20 is better, slower, easy to grasp। 15-10 के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस होके जल्दी जाना है, मीनिंग कि आपको तेज होना है, क्योंकि वो आता है, देखें ये बना, उसने आपको यहाँ से यहाँ 6.5 पॉइंट दिए और डन हो गया, राइट। सो दिस इज टू क्विक फॉर यू गाइस। SRE में 30 में जाना। मैं आपको और आपके लिए और आसान है, दोनों ग्रीन है, यहाँ मिड बैंड से बाय करें ना, तो देखें दोनों चार्ट ग्रीन थे ना आपके, तो अगर आपने यहाँ से बाय किया तो आपने 2 पॉइंट लेके बाहर आ गए ना। आपके जो स्टेज है ना, मैं आपको उसको और इजी करा, दोनों चार्ट ग्रीन, मिड बैंड से बाय, दोनों चार्ट रेड, मिड बैंड से सेल। कौन सा बाय करना, 30-20 से और नहीं 15-10 आपके लिए, 15-10 बिल्कुल, क्योंकि आपको मैं रिट्रेसमेंट डाइवर्जेंस वाला ट्रेड नहीं दे रहा, SRES वाला नहीं दे रहा। 30-20 ग्रीन, 15-10 ग्रीन बाय, 30-20 रेड, 15-10 रेड सेल। कहाँ से? मिडल ऑफ द लाइन से। हाँ वही देखें, मिड लाइन से आपको लेक्चर डैनियल में यही सिखाया जाता ना, ABC, ऑलवेज चेक द न्यूज, what is written there bullish buy, what is written there bearish sell, that's it। आप इस पे रहें, आपके 2-2 पॉइंट निकलते जाएंगे, क्योंकि अगेन आप हो ये रहा है कि 8, 9, 10, 12 कॉन्सेप्ट हैं, तो आप स्विच करते हैं ना तो पहला भूल जाता है, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं ये वाले, स्पेशली एरिया वाले। आप हाँ जी, ग्रीन मिड बैंड, हाँ बाय, लेकिन अब मैं फुल चैलेंज आ रहा, जब तक वो ग्रीन वो रेड हो जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वेट करें, जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, मिड बैंड से जब उठाते हैं वो प्राइस के आते तो कोई बात नहीं, बैठे रहें,
बैठे आएगी सर, 4 दफा आई है पीछे, तो वो भी तो आई गई है ना, तो आप हौसला रखें, आ जाते नहीं नहीं वो होता ही है, नहीं वेट करना है आपने, ऑर्डर लगा के वेट कर। अब मैं इस वक्त R2 पे बैठा हूँ और S2 पे बैठा हूँ, अगर शाम के 4 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, 11 बजे आए, बैठा हूँ। आप मिड बैंड पे जब बैठ जाते हैं ना, होता ही है कि जब वो कैंडल नीचे उतरना शुरू हो जाती है ना, आप कहते हो ओ माय गॉड अब तो प्राइस नीचे उतर। बैकग्राउंड कलर जब तक ग्रीन है आप बाय कर रहे हो, बैकग्राउंड कलर रेड होगा फिर आप दूसरी पोजीशन में हो। जैसे अपना ग्रीन है हाँ मिड बैंड में 15-10 में तो मैंने बाय कर लिया, ठीक है कर लिया, प्राइस मिड बैंड में, ठीक है, लेकिन आगे जाके वो प्राइस नहीं मिली, लेकिन वो रेड हो गया, तो फिर क्लोज करते हैं ट्रेड, दैट्स इट, टाइम बाहर आ जाए। बेशक नुकसान, देखें कोई भी ट्रेड 100% नहीं है, हम प्रोबेबिलिटी हायर टू हायर करते हैं, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने बस लिया और बस ग्रीन ही होगा। नहीं 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 सर, आपको क्या समझाया गया, इफ कलर चेंज एग्जिट, अगर आपके अगेंस्ट चला गया है तो चला जाए, देखें। हाँ नहीं नहीं पिछ कहाँ नीचे है सर, 15-10 देखें, 15-10 आपने बाय किया, आपके 2 पॉइंट निकल गए हैं, आके चले भी गए हैं 2 पॉइंट। हाँ हाँ वो टेस्ट कर रही है, देखें आप प्राइस क्या थी, ग्रीन था ना, आपने मिड बैंड पे प्राइस डाली और अपने 4 पॉइंट ले लिए, डन यार, खत्म, ले लिए, ये वाले ले लिए मैंने कहा पिछले तो 150 छोड़ दिए थे, ये वाले 150 ले लिए ना 2 पॉइंट ले, डन करें, आपके $100। अब पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना बना लेते हैं। एक ग्रीन है, दूसरा ग्रीन है, मिड बैंड पे ऑर्डर लगाएं, देखें प्राइस नीचे आई, मिड बैंड पे टच किया, ऊपर चले गए, खत्म। सर हम इसके लिए तो कोई इलाज नहीं, हम रिटर्न गारंटी 100 की देते हैं ना, अब आपको रिटर्न 10,000, लेकिन 100 से 10,000 निकल आता है यार, 100 से 10 निकला। यही काम अगर आपके 10 अकाउंट है ना 7, तो ये 2 पॉइंट आपके $1,500 बनते हैं। एनीवे, कमिंग टू R1 वन मोर टाइम, लेट्स सी। यहाँ से हम देखने R1 पे जा रहे हैं। हाँ जी देखिए प्राइस चढ़ने की कोशिश कर रही है सर, 92 से जा चुकी है, मेरे हिसाब से R1 हो चुका है, 92 से देखें गिर चुकी है, तो शायद मे बी द अपर वर्जन 5700। मैं R2 पे बैठा हूँ जी, मैं R2 पे बैठा हूँ 30 पे, नहीं 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 सॉरी, मैं थोड़ा सा नीचे चेंज करूंगा, अभी 24 पे, ठीक है सही है, तो होना चाहिए क्योंकि अपर बैंड पे है। अब जो ब्लू लाइन जा रही है R2 के अंदर से, वो बनाता है एक सेकंड में आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि वो क्या है। तो यहाँ हम्म, ये ग्रीन है, हाँ जी, ये ग्रीन होने जा रहा है, नहीं नहीं ग्रीन हो चुका है सर, बाय कर सकते हाँ हाँ बिल्कुल हो चुका है, आपका ट्रेड मिस भी हो चुका है, एक वो पिछला वाला मिड बैंड आया था, ले गया ऊपर, sorry how to buy and sell, yes that's what I'm coming, I'm just waiting for this lady, every time I start my orientation somebody escapes, so otherwise वो कहेंगे हमने मिस कर दिया, तो I think the moment she's here I will quickly explain. वो है लास्ट, अगर आप 60 मिनट का चार्ट देखें ना, तो ES के R1 पे एक प्राइस खड़ी हुई है, पिछले वीक का जो है, लास्ट वीक का जो हाई है यस, तो वहां पर कहाँ खड़ी है, 5724 पे खड़ी है, तो मैं 24 के अंदर से मैं सेल करूंगा, मैं 24 पे बैठा हूँ। हाँ जी हाँ जी बताइए, हाँ जी मैं उधर आ जाता हूँ, मेरा बस आना है। हाँ ये 4 वीडियो बिल्कुल सर, ये और एक आ सकता है पूरी एक पर एक बोनस थोड़ा सा चलेगा, अच्छा आज का बहुत डाउन मिलेंगे सर, ये देखिए ये लाइव चल रहा है, इसकी इसका नीचे है, सॉरी ये एक लाइव आप लॉग इन कहना मूव करेगा, एक ही रिकॉर्ड ही टाइम इसमें लॉग इन करें तो बस, और फ्रंट पे नीचे लिखा होगा लाइट सब नहीं होगा कराऊंगा,
चलेगा आईटी करते हैं दैट करेगा सही में मैं वो जाऊंगा हां और शुरू में ये काम है 5 मिनट ये आईटी के बाद ये आईटी इंडिकेटर 3000 घंटे किताब जो बोलना पड़ेगा सीपीटी का जस्ट अभी के लिए पर चल तो रहा है इसके क्लिक करना तो क्लास के बाद उसको आगे बात इसका तो इन लाइक इंडिकेटर्स समझ को ना जो ये आज की ये क्या है ये हम पे सेट कर पाया R1 पे सॉरी करेगा यानी मेरी प्राइस तो आगे नहीं रहती है बोल दिया सर मिडनाइट डाउन इसको 10 मैं जब ये खोलता हूँ ये दो मिनट का देता है राइट क्लिक करते हैं तो खोलू पड़ेगा क्या हाँ थोड़ा ले लो ये नहीं थोड़ा आप से प्ले करो यार थोड़ा ऊपर है हाँ ले मैं कर सकता हूँ हाँ ले लो हाँ ले लिया अभी ले लिया यू कैन ट्राई अराउंड नो सो नाइस अभी ज़्यादा छेड़ो मत रीलोड कर देता हूँ अकाउंट में आ गया लाइव है 2023 तक जाती Correct. green red ठीक है। green red हाँ ये तो डॉलर का मान क्यों यहाँ तो ज़्यादा ये मिड नहीं कैश वाली ये है ये क्या है चलो एक्सेस जाना क्या अभी बॉटम ऑफ द बार 1510 पे आया था और गेव यू ए पॉइंट। छोटी सी जो बिग बनती है बॉटम ऑफ द बार ये बाद में बनती है होने के बाद कि मैं यहाँ आया था इस प्राइस पे। करेगा ऐसा you can do it manually. Yeah, that's what he said. Yeah, Yeah, you don't want to lose. Lose, Almost yeah. 1.75. क्लोज कर देता No, हूँ no, फिनिश कर play around. इसको ऊपर थोड़ा सा खोल दीजिए नहीं अभी छोड़ दे पहले हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ अब वो कुछ ही नहीं ये देखो ये देखो पॉइंट पे जाएगा हाँ उस टाइम पे हो जाए और आपने माउस से ऊपर थोड़ा नीचे क्लिक हो जाएगा मैनुअली कर सकते हो बस all right I'm going to give you guys this अभी ना अभी अभी क्या Now we have one more person. Yeah, That person. We just when you watch Okay, no problem. until you were waiting in the line All right, no worries, no worries. No. I just don't want to make sure that so. Okay. टच करने वाला स्ट्रगल कर रहा है
All right, so the new users, welcome to superareas.com, Win Lifetime, the trading floor. And let me give you some basics first. And what is it that you're doing? How long it's going to take? When do you expect to make some money? All of these things are serious, and it's a serious business. Serious. I have users you can meet. They come here. They do the fastest somebody made money was $400,000 in 90 minutes. That's how. And we deal with every level of users in terms of finance. That I deal with absolute beginners, actually a little bit above beginners, but Majid Bhai is there, Sunny is in the other room. So somebody who's managing a $10 million account, not a big deal. Somebody who's managing a $50 account, it's okay. So we treat every single student with the same. We'll give you the same support, same everything. Doesn't matter what your account size is. It's just that the advice you will get is from a different person. If you're treating at least $100,000 plus account, you go see Daniel, right? So the idea is that you're going to get advice from him. I rather not give you. We don't give financial advice, but we can say, hey, okay, this is what we think can happen. So I deal with the floor when they kind of graduate the theory. So this is our WhatsApp number for our support. So take it down, 647-228-0694 is the number. This number doesn't take a call. If you have a thing, you send me a WhatsApp. Hey, so somebody will read it because 4 people have access to it. They are all logged in. They're all replying and they are trying to see who's to reply. Sometime I'm watching this. You have sitting at home and forgot to say it. My name is Rafe, by the way. You can save it. Super Areas, Rafe, things like that. So the idea is that if you have a questions about charts, your charts are not working, you have to talk to Daniel. Everything else, generally, I will help you out because he is the one who is dealing with the software portion. You have taken the 4 classes, 2 weekends, and you're done the theoretical part. My job, Monday to Friday, is to lead you in. And the way the floor works is from 9 to 11:30, I'm not really teaching anything. Because I like to trade myself too, and I'm doing analysis. Hey, market is doing this, ES, Nasdaq, gold, Russell, Dow. We have 15 markets, but primarily I touch 2, ES and Nasdaq. So my job after 11 o'clock, when it slows down, next momentum will come at 2 o'clock. So from 9 to 11 is generally the trading. You're welcome to come sit on the floor, but I can't answer a question. This is working, this is not. We are expecting everybody to know what everything is. But from 11 to 1, you can ask me same question 1,000 times. No problem. I will not. I'm here to make sure you make money. Everything I say is recorded already. Every concept, how to buy, sell, how to do copier, how to do an ATM, what is a stop loss. Everything is recorded on our YouTube channel. Just go there, subscribe, and you can pick the video. It's all there because some concepts take time for you to teach. So this is an AI-based algorithm that you have using in front. It predicts that you are going to either buy or sell. The idea is you're going to a bit about the company. This software works with futures, stocks, options, crypto, everything. Tomorrow, you want to do some stocks of Apple, you can analyze it. You want to buy FDAX, you can analyze it. You want to know crypto, you can analyze it. You want to know Bitcoin, so this works with everything. Number 2, we've been here since 2008. This organization has 15 employees that are working around the clock to make sure we have 2 trading floor. We have a floor here. We have a floor at Trinity office. So 1575, if you go on superareas.com, at the bottom, the address is there. We have 12,000 or so members since 2008 that has graduated, taken this program, and then either trading or not. Some are not. So right now, the software that in front of you is called Ninja Trader 8.1. That's the software that you're using to analyze everything.
We have 4 data analysts. What their job is to make sure they can pinpoint where could the market correct from, areas, levels, things like that. So some serious people are looking at before we post those areas. 13 certified mentors. Mentors mean I have 13 users in our organization who can teach you by sitting beside you, but that you gotta pay extra to sit down with them if you would like to. Every Saturday we do free seminar, and the Trinity we do it every other Saturday. So if you were this Saturday, if you come, I can really teach you like the basics. After 3 to 5 to 2 hour sessions, we do this Saturdays. 15 markets we do, and 3 a new students who has never ever traded generally takes about 3 months, and a faster user can take approximately 14 days to, depending on a month, how fast you can learn how to buy or sell. You don't have to do, so this is your pathway, how you will do your trading. First couple of weeks, you will do demo trading. Demo means the money is not real. It's simulation. You buy, sell, lose, win, doesn't matter. After that, we'll put you into a company called Legends. It's a funded program. After that, we'll put you into Perdia, and then your own capital, maybe 6 months. So please don't worry about having money into this. You don't need money to trade. You just need $50, $60 in order to start learning and earning, and very soon you will get to Perdia. After Perdia, you can move into FTMO and then consistently make money month after month after. It doesn't require a lot of. FTMO is a different type of a funded company that lets you do stocks, and CFDs and things like that. So Perdia is similar to what all of this. So right now, by the way, we are in R14 ES officially. Give me just 1 minute. I would like to. While this is happening. We're officially in R1. Nasdaq के अंदर ही है तकरीबन R1, I mean ES के अंदर, sorry. Okay. Okay, now you are all into trading, and you need to know what exactly is that you're trading. You are going to become a day trader. You're not going to become an options trader, a forex trader. A day trader, the difference of a day trader is they put in a trade every day and they close their position by 5 o'clock. So you open 6 p.m. So this market runs 23 hours a day. You will open your trade approximately for maximum 23 hours a day. So you're a day trader, that's the job. So I hope everybody's clear. Once you are done this, you can become a position trader, stock trader, but your job is, so you are going to become, number one, a day trader. So if you are at a birthday party, at a wedding somewhere, you sit down and you're like, I'm into trading, you should know what you're trading. So the first thing is you are trading, and daily. And the markets that you trade, because there are many products out there. People, you can say I trade CFDs, stocks, options, crypto, whatever. But primarily, you are a futures trader. Your job is to trade futures. So, because last thing you want is you talk to somebody and you don't know these 4 or 5 basic things, they're going to say, I'm not sure who's teaching you. So I want to tell you, you're a day trader.
Because stocks trading is different, option is different, crypto is different, forex is different, and primarily you're going to be futures trader. But once you learn this, everything else becomes very easy. Third thing is you're going to within futures market, we will give you one market, which is S&P 500. That's a market. That's an instrument, what we call, that you are going to be trading. The capital that you will put in is not your money. And once you're done learning how to trade, you will be using a funded company in order to trade. You're not going to be use your own money to do this. The software you're using is NinjaTrader 8. People ask you, you use Meta, you use Binance, you use CTrader, you use whatever. You can say, I use NinjaTrader to do it. And the algorithm. Some use TradingView platform, different algorithms. So the algorithm that you have using with us is called that's called super areas. So the algorithm that's sitting on your thing is called super areas that predicts everything. So these are the 4 or 5 things that you need to know. What a day trader does, it trades daily, 90, 60, 80 minutes a day. There you're going to be trading futures. Now gold futures, crude oil futures, crypto futures, forex futures, but futures is the market. Funded program, not on capital. An algorithm is super areas and software is NinjaTrader. Now, what is futures trading? Futures trading is primary just predicting price is going to go up or down. You don't own anything, you don't buy anything, you don't sell anything, you just flip a contract. So there's a price of S&P 500. It is running at 56.94. This is S&P 500 June 25 contract. There's a price 56.93. It's moving on your charts. Your job is to just tell the broker or the world or decide, is the price going to go up or down? That's it. You don't need, the price of S&P is $5,694 for this contract. They don't care you have that much money or not. All they need to know, do you think price should go up or down? So a lot of millions, trillions of dollars are moving left and right, up and down, from his pocket to her to his to his. Somebody lost 100, you made 100. So money is just moving around the globe, zero sum. Nobody's winning, nobody's losing, pockets are changing. So your job is to predict. So let's write 56.94. Is this going to go up or is this going to go down? That's it. If you have the right direction, you win your price. The prize is that profit. If you don't have the right direction, you lose, you have a loss. Simple as that. So this is not complicated. I'm going to make things very easy. Price is 56.94. You think it should go up? Yes, goes up. Goes to 56.96. $2, it went up. You got $100. That's how easy damn this business is. That's why I love it. You just price went from 56.94 to 96, $2. Every time it moves $1, you make or lose $50. That's what is charged. And so ES, $1 equals $50 movement. Now it's positive or negative. You say it's going up, but it goes down, you lose $50. But on the contrary, the best part is you can sit down here and you say, I think price is going to go down, right? So of course that can work absolutely in your favor as well. Just give me 1 second. I'm in a trade from an area. So because I have a live trailing threshold, this becomes a little bit annoying. So I gotta
sell from here on bull noxes. Okay. Reopen that position. Perfect. Everybody clear here so far? So you pick something, 56.94. So what do? We are a software company. We're not financial advisors. I don't, जी सर सर हो चुका है, मैं फिर ऊपर लूंगा, देखें R2 नहीं लीजिएगा, फिर 30 पे मेरा नंबर है 57.24, पिछले वीक का हाई 24 है, ब्लू लाइन R2 के अंदर से जा रही है, तो R2 वहां बैठ, नैस्डैक तो आपको पता है मैं करता ही R2 हूँ, तो anyway, so market goes up, market goes down. So where do we come in? We are not a financial advisor. We don't manage anybody's account. We don't take your money and put it in somewhere and give you returns. We have written a piece of software that helps you understand, should the market go up or down? That's all. And with the right guidelines, you have the highest probability. So market is its own thing. Billions of dollars are moving, banks are buying, insurance companies are buying, individuals are buying, hedge fund managers are buying. We don't control, well, market is market. But will the price go up or down? We have some tools that we have built, and these are look at order flows, we look at some mathematical calculations based on it, and we predict. Say, Donald Trump can say something right now and market can crash 100 points. We can't control. No software in the world is going to be able to do it. So these are news, rumors, economic conditions, some policies can change it. But in a normal market, this software helps you predict. So this software, 5694, we have about 25 calculations happening. Because right now, live on our server, and it's pushing it to your computer. And it's saying, hey, I believe at this time you should be buying. So 1 minute you will be buying, 30 seconds later you could be selling. Or next another minute, trend could change and you could be buying again. So that's the whole game. The whole game. Red चाहिए? Hello, red. No problem. So this software in front of you helps you predict the market direction. You can sit here and say, all right, price is going to go to 92. Yes, it does go, and you make $100. That's it. Your goal on whole 90 minutes, you can trade, by the way, 23 hours a day. You can sit, buy, sell, but then you'll be gambling. Because software is not like, 100% in terms of, it needs some market momentum. So in the morning, 8 to 11 is a good time. In the afternoon, 2 to 5 is a good time. And if you are an early riser, 3 o'clock in the morning is a good time. That's the 3 big sessions. 6, 3 से 6, 9, 8 से 11 या शाम के 2 से 5. ये टाइम है जहां आप वॉल्यूम होता है, क्योंकि आपने किसी के अगेंस्ट ट्रेड करना है ना, बंदा ही को नहीं बैठा तो आप ट्रेड क्या करेंगे? आप कहेंगे बाय, वो एक ही कैंडल पे खड़ी है, किसी और ने भी तो जाके कहना यार श्योर बाय, या 3 हो या 4 हो या 5 हो, फिर ही ऐसा चलता है ना सारा. तो so you can predict anything. Now I'll come back to before I get into a bit technical on how to buy, how to sell. 100 people will join, whether it's our program or doesn't matter. Only 3% are winners. That's just the way industry standards are. So eventually, what will happen? We teach you certain things you don't follow. Either you will stop. You'll say, "Okay, I tried. I bought it. I paid 5, 6, 8,000. It's not for me." Right? But those who manage to cross the bridge in discipline, they're making wicked amount of money. How much? I have a guy who made $55,000 1 month last year. And you can meet him. Ordinary person, has a full-time job, hasn't quit his job.
Jatin will come. He made more than $10,000, joined us 5 months ago, right? So those that have made it, right? Yes, thousands joined, but these are only 3% are making a lot of money. And you know what they're doing? 100 a day, 200 a day. And you're going to say, how does 100 a day make me so much money? Yes, we'll explain you down the road. But what happens is you make 400, then you lose 400. Then you make 500, then you lose 600. You make 900, then that's not how we plan to do. This is a serious business. You have to come in, you have to sit down. And the only thing you have to control is greed and discipline. Literally, computer will say this is where to buy, this is where to sell, this is where the stop loss is. That's it. So you wait. So today, for example, I'm waiting for the price to hit a certain number. When it goes there, 57.24, I will sell. If it doesn't go there, I'm not going to sell. So when you sit on a mid band, just wait for the price to sit on a mid band. So the key of this business is discipline, and just master a skill of $100 per day or 100 to 200 per day, and you can like literally make $10,000 a month with 5 accounts of take profit or 2 accounts of per dia, these things. And I'll explain you how you can merge these accounts to make a ridiculous amount of money. So if you have, let's say, a company is called Take Profit, you will go through it. And if you have 5 accounts, today you have Legends 1 account. After doing Legends, I want you to do stage 2. Stage 2 will get some money out, $1,500. We'll take that money, invest into a different company. So let's say you have 5 accounts of Take Profit. You put one trade. All 5 will copy automatically. If you make 100, what is 5 accounts? 500. If you trade for 20 days, that's 10,000. I have a guy in 1 day, $76,000. 76 grand. How many accounts? 42 accounts. But he's an advanced user, 15, 16 months into it. So, investment was that? Sorry? How much was the investment you had? Sir, investment less than $2,000. कितनी मैंने खुद अपने स्टेटस पे लगाया है, मैंने $170 इन्वेस्ट किया है और उनसे $4500 लिया है. इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है चाहिए यार? इस कौन सा ये वाहिद बिजनेस है जो 170 पे मुझे 4500 दे गया, राइट? सो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, सिर्फ एक ये करें स्टेज 1. अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? $50. आप 1 2 3 4 ने लिया, 15 दिन में इसको फिनिश करें. एक इन्वेस्टमेंट और लगेगी 150 की, 200 की इन्वेस्टमेंट हो गई. मैक्सिमम 20 दिनों बाद आपको 1500 दे देंगे. फिर आप देखें यार, आपने 200 लगाए, आपको 1500 आ गए. उस 1500 को लें, एक कॉपी खरीद लें, 2-3 टेक प्रॉफिट लें, $100 करते जाएं और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, राइट? सो स्लो एंड स्टडी. I hope you can have this discipline, what have you today, because nobody shuts down after $150 के जी बंद हो गया, चले गए. Most people will say कि यार 1 पॉइंट और ले लें, 2 और ले लें. 450 की लिमिट है ना, तो 150 हो गया, कंप्यूटर बंद करें, घट जाए. तो 100 से 200 के दरमियान में की वीडियो में ना एक छोटी सी लाइन है, कहते हैं फिर मैं पता नहीं चलेगा तो मैं कान में थप्पड़ पड़ रही हूँ, कौन मार रहा है. Yes, absolutely right, absolutely. ऐसे ही करते हैं. सही लग रहा है ना, क्योंकि मेरे को भी पड़े हैं. नहीं अभी तो सर आप ईए में हैं, अभी आपने तो पीए देखा ही नहीं है कि पीए में क्या होता है. जब आपको लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड का वो लगेगा ना कि 150 देखे थे, मैंने नहीं बंद किया तो उन्होंने 250 काट लिए. कान में गूंज रहे उससे वीडियो होता ये है कि आपने ट्रेड डाला, ग्रीन था, वो रेड हुआ, 150 माइनस 200 माइनस. आपका माइंड कह रहा है यार यहाँ से प्राइस जाएगी. क्यों जाएगी भाई? वो कंप्यूटर कह रहा है नहीं जाएगी. तो वो होते क्योंकि हुआ ये था कि 2-3 दफा आपने क्लोज नहीं किया, वो प्राइस आ गई. आपने कहा देखो लास्ट टाइम भी आई थी, अब भी आ जाएगी. वो 150 से -1400 पे होता है और फिर बंदा कहता है यार ये जो है ना. So eventually, I'm just saying 1 out of 3 is 30%. I'm talking 3% are winners. 97% will eventually give up. Because हमें अपने लॉगिन से पता लग जाता है ना. सिर्फ अगर मैं उनसे 12,000 स्टूडेंट है ना, ला के सामने एक की चैलेंज है ओपन, बैठे और कहें कि आपसे 100 नहीं बनता, कहते हैं यार 100 बनता है, उससे ऊपर फिर मसला शुरू हो जाता है. मैंने कहा फिर आप 100 तक रहें, आप निकल जाएंगे हर ट्रेड के अंदर से. सो
ये आपका टारगेट है. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू सम बेसिक स्टफ. जी जी सर, हर चीज रिकॉर्ड है, हर चीज, हर लेक्चर में रिकॉर्ड है. ये भी रिकॉर्ड होगा. हमारे गुरु का प्रवचन था, हमने तो रिपीट किया. सिर्फ फर्क ये है, आप तो निंजा 7 वाले हैं. यहाँ हम बैठते थे, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि गलत ट्रेड डैनियल के सामने डाल दें. देखिए, इस फ्लोर से पहले मैंने ज्वाइन किया इसको 3.5-4 ईयर्स अगो. उससे पहले वो यहीं बैठते थे और आपको टीच करते थे. कैपिटल रियल था, फंडेड अकाउंट नहीं होता था. ये 4 साल पहले तो किसी की हिम्मत, आपने जाना CIBC, RBC, स्कोशिया, PMO जाके आपने GFF को वायर करने $3,000. अब आपके अकाउंट देखिए, आज आपने 50 दिए, 1500 का अकाउंट करे. इमेजिन अब 1500 का अपना अकाउंट है. सर ये 150 लेंगे कि नहीं? सर बीपी की गोली साथ ही तो मैं शुरू में जब पुराना वो फंडेड अकाउंट नहीं होते थे ना, अपने नए यूजर्स को ना एक तस्बीह साथ देता था. ट्रेड डालो और शुरू हो जाओ. आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी बंदे वीडियो भाई से सवाल नहीं कीजिएगा. तो क्योंकि हमें होता है यार, इसमें अल्लाह ताला को लाने की जरूरत नहीं. क्योंकि नहीं, क्योंकि आप वो कह रहे हैं कि डाउन जाए, वो कह रही हैं अप जाए, मैं लॉन्ग. कहाँ मसला है भाई? वो कहता है भाई फरिश्तों को इधर ना भेजो विल लाइफ टाइम पे कि 2 ट्रेडर लड़े हैं आपस में, उसने शॉर्ट किया हुआ है, उन्होंने लॉन्ग किया हुआ है. मतलब मैं अभी शॉर्ट में हूँ, मैं दुआ करनी शुरू करता हूँ यार मार्केट गिर जाए, और वो कह रहे हैं यार R2 पे हूँ, मैंने लॉन्ग किया हुआ है. तो देखें, ऊपर वाला भी कंफ्यूज रहेगा. तो और दूसरी मैं आपको साथ गिफ्ट देता था, एक स्टेटस्कोप. इसमें सीरियसली बकायदा, मैं आप ओपनिंग में हमारे दूसरे ऑफिस जाए ना, तो आपको एज ए ओपनिंग प्रेजेंट मिलता था एज ए जोक कि भाई आपकी धड़कनें भी कंट्रोल रहनी चाहिए. ये नहीं है कि बहुत एक्साइटेड हो गए या बहुत डाउन हो गए. तो आई यूज्ड टू से कि यू नो, I asked my other relative, how is your heart condition before you join, right? आप इमोशनल ना हो. ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बात नहीं. अगर 1000 बन गए कोई बात नहीं. 1000 इसमें जितना मनी मूव हो रहा है ना, प्रॉब्लम ये है, कल मैंने एग्जांपल यही दी थी पॉडकास्ट पे कि नायग्रा फॉल्स है और आपको ने एक गिलास भरना है. होता ही है कि 90 मिनट में आप ये गिलास भर लेते हो, फिर आप शाम को 4 बजे गिलास भी फेंक आते हो और खुद भी छलांग मार देते हो, राइट? तो अकाउंट भी गया, सब कुछ लुटा देते हैं. तो ऐसे नहीं करना. इट्स अ सीरियस बिजनेस. रोज के 100 से 200 बनाते जाएं, आपका टारगेट मीट होता रहेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट सम, आई विल राइट सम थिंग्स. 5694 ये आपकी प्राइस है. तस्वीर खिंचवा के ना अपने घरे को. सर आगे के बहुत ज्यादा आवाजें आ गई देखो. आपको थप्पड़. सर एवरी मॉर्निंग आप लोगों को खड़े होके ये पढ़ना चाहिए यार. मैं आपका प्लज करवाता हूँ, आपके सुपर एरियाज पे लिखा हुआ है. बल्कि यहाँ पर तो वो सुगर ट्रेड हो रहा होता था पहले. आप 2 हफ्ते 3-4 हफ्ते पहले आते ना, मैं खड़े होके आपसे ये कहलवाता था कि मैं जी न्यूज चेक करूंगा रोज. मैं आगे किसी ने न्यूज ही नहीं पढ़ी थी. वो कहते हो क्या हुआ जी मार्केट को? मैंने कहा यार 10 बजे देखा था, ये क्या हुआ. मैं हमेशा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मैं हमेशा स्ट्रैटेजी करूंगा, गैम्बल नहीं करूंगा. उसके बाद डिसिप्लिन करूंगा और जो देखूंगा वो करूंगा, सोचूंगा नहीं. सोचे में जाएंगे तो खराब. फिर जो न्यूज चेक करने का इसका कोई तरीका है? नहीं, सिर्फ आपने रेड उस टाइम पे न्यूज नहीं देखनी. फॉरेक्स का डैनियल का चैप्टर 1 जो है वो इसी बात पे करता है कि हाउ टू काइंड ऑफ रीड द न्यूज इनसाइड योर फॉरेक्स फैक्ट्री पे. इट्स ऑन देयर ऑन सुपर एरियाज के फ्रंट पे. सर मैंने कोई सिचुएशन है प्रेडिक्ट करेंगे भाई मार्केट क्या जाने. वो जो तो पढ़ वाली बात है उसे नहीं याद आई. हाँ ये करता है. 1700 अकाउंट है इधर माइनस में. वो दे देगा. मार्केट कैसे जाने दे. कहाँ से $100 माइनस कर. बिल्कुल था. अच्छा डेमो में
चौटी में उन्हें आज नहीं होता इसमें डाला था जनरल छोड़ दे इसमें मैं डाला ये सब किया था जितनी भी जनरल सीधे डालने ईमेल स्क्रीनशॉट उसको ऐसे ही करना इसमें तो सही है बस मैंने ये Okay, on your chart, right now, there's a white line going. There's a white line going through your charts. On all the charts, 15, 10, 30, 20, every chart, there's a white line running. एक white line जा रही होगी आपके सारे chart में. That line is called the current price. That's called the current price. That's your current price. जो एक लाइन जा रही है ना white, वो आपकी current price चलती है कि इस वक्त मार्केट में प्राइस चल रही है 56.96. ये current price move up and down और ये tick by tick by tick, right? So the way ES moves, let's say price is 5700 and 56.99 and 5701. The way ES moves is tick by tick. $1 has 4 quarters. Asan hai. 25 cents, 25 cents, 50 cents, 75 cents, and $1. So from 56.99, it needs to move up 4 times before you get into $1. And each tick has a price. So when every time it moves a tick, there's a price. So to explain what you are doing, your job in our software is just to buy or sell. Literally, that's all. You don't have to, honest to God, do anything in terms of drawing a line. कुछ नहीं करना यार, सिर्फ अपना माउस लेके जाना है, बाय करना है या सेल करना. इतने कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम आपको रेडीमेड दे रहे हैं. Relative strength index ready, Bollinger Bands ready, this ready, that ready, right? So if you place your order at the mid-band price came, picked you up, that's all you have to do is do a buy order or a sell order. Rest, the software will take care of it. Now let me give you a very, very clear picture. Okay, the price गिर गई है? No problem. हाँ, तो मेरी दुआ हो गई ना कामयाब? हो गया अगर टेकन नहीं, मैंने कहा मेरी दुआ कामयाब हुई ना, जो R2 की तरफ सोच रहा था उसका अल्लाह किधर गया. अगर तो it has nothing to do with it, it has everything to do with कहाँ से आप एंट्री लगाओ अच्छी और फिर दुआ करो कि यार मैंने सारी चीजें देख ली हैं, ये ग्रीन है, ये रेड है, R2 है, तो मेरी दुआ थोड़ी सी डिफरेंट होती है. मैं कहता हूँ यार कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया है R2, मैं अपना जाके R2 लगा दिया, मैं अपना जाके SL लगा दिया, फिर वहां से दुआ शुरू करेंगे यार यहाँ से मेरी चीजें ठीक हो जाएं. आपको पता है नहीं और आपने सिर्फ सेल दबा दिया, आपको पता है नहीं, आपने सिर्फ बाय दबा दिया, वो फिर गैम्बल हो जाता है. लाइक गैम्बलिंग नहीं करनी, हमने यहाँ बैठ के ट्रू ट्रेडिंग करनी है. तो उसकी वजह से एक दफा अच्छा ट्रेड लग जाए उस पर दुआ करेंगे यार सारों ने 57.30 पे डाला है यार, अब दुआ करें नीचे आए, यहाँ से स्टॉप लॉस ना हिट हो. वहां से भी हो सकता है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपने एक्शन पहले ठीक करें, उसके बाद जो है ना अगला खराब की स्ट्रेस ना लें. Okay, this will be very critical for 3 of you to learn, because this is, you have to know if the price is 5,700. Now you have a buy and sell. If the white line is current price, if you want to buy below the white line, you have to use something called buy limit. So the word is called buy limit. These are type of orders that you will be using mostly. There are 1, 2, 3, 4, 5, and 5, 10 type of orders, but primarily you will use 2. So price is at 5,700, mid band is sitting at 56.90. You will do a buy limit order. Right click, buy limit, that's it. If the price is 5,700 and you want to sell at mid band is sitting at 57.10, you will do something called a sell limit. It's called a sell limit.
So buy limit, sell limit, buy limit, sell limit. That is all. Now I'll explain you on a chart now how to do this on buy and sell. Now, wherever you buy, you have to exit by selling it. So if I buy something at 56.90, this is my buy column. Sell column right here. If I bought something at 56.90, this calculator, what is my job? Is to hopefully will go to 91, 92, 93, and I will make money. But what happens if it goes to 89, 87? I will lose money. So however you start your transaction in buy side, you have to exit on the sell side, whether in profit or loss. Doesn't matter. So this is how the transaction is done. Your commissions are done by full round. You enter buy and sell, then one trade is done. If you have 2 lots at the bottom, you will pay twice commission. If you have 3 lots, you will pay. I hope you did this with 1 lot, right? That's perfect, right? So if you bought it here, you exit in sell, in profit or loss. So you did a buy limit at 56.90. You're hoping price is rising. You exit at 56.91. को लिया ट्रेड मेरा तो नहीं बनवा अच्छा बंद कर ठीक क्यों हाँ जी. So if you open up an interactive rope account, it can connect to a thing, right? Yes. And we can buy and sell Stocks. on Yeah, correct. You got the data from Kinetic? No, even interactive भी देगा data. वो साथ connect हो जाता. So if you sell something 57.10, your job or your goal is to hopefully price is dropping because I've sold it, I've shorted it. This is called shorting a stock, and I want to buy back cheaper. I want to buy back at 9, 8, 7, 4, but you will exit in the opposite direction. So if you sell something first, you will buy it back later. If you buy something first, you will sell back later. So that's how the whole buying and selling. Now I'll show this on the computer on how to do buy, how to do sell on this first attempt. But please do one thing there. If you log into super areas, new users, I know Daniel's lectures start every Saturday, Sunday, then Saturday, Sunday. All 4 lectures are recorded for you guys. So whenever you get time and you can always refer back to the lectures. Number 2, there's a video called Beginner's Guide to Ninja Trader. Please watch that. We'll show you how to use open, close Ninja Trader. So, okay. So this is the chart right now. I hope everybody has it open, and this is how it's going to look. So right here, it says chart trader. On the top, you will see chart trader. So if you turn it on, chart trader, you will have this right side, this thing running. So that has your account. किसका नहीं आ रहा था? आपका नहीं आ रहा था. अभी fix the button. No problem. You see this, right? लेकिन आपका chart trader आ रहा है? Okay. चार्ट ट्रेडर है ट्रेडिंग करता हूँ तो राइट करके वो ऑप्शन नहीं देते सर आईटी वाले को मारा करता है बहुत स्लो मार्केट है जी आज. For beginner, for okay. Beginners के लिए. For us, mouse here, time to move. No problem. Okay, so do you see this icon right here on the chart? This line with the yeah, this is called chart trader. If you turn that on, click it on and turn it on. Yeah, I see it. You see it? Turn it on, click on it.
R1 पे ना Nasdaq गई, ES गई थोड़ी सी बस. So you will see something right here, just to explain you. This is written as your instrument, what you're trading. You're trading S&P 500. Forget about GTC for now. This is your account size, simulation, funded, own capital, per dia, legends, account will show here. Third, quantity, one number of lots, 2, 3, 4, 5, stay to one for now. And the last things, forget about ATM for now. What I want you to do is go down here below the white line in this gray area and right click, and you will see something called buy limit. So this is how you place the trade for buy limit. If you go above the white line, currently you will change it and you can do something called sell limit. So this is what I explained, buy limit or sell limit. If you're above the white line, it is by sell limit. If it's below the white line, it is sell limit. So okay, just check. Do you have an account here? Yeah. Okay. So go in the gray area. आपके नहीं आ रहा. Okay. मैं देखता हूँ. ग्रे एरिया में आने चाहिए. Yeah. Back into R1. Maybe Nasdaq goes to R1. Let's see. Very, very slow today. ड्रॉप डाउन पे इसको सेलेक्ट करो पहले हाँ We are in 15. So 1.2. So take 12.5 times 4. दिखाई नहीं देगा. मैं आया. यहाँ पे वन आता है Next one, so the bottom 5 people instead. फाइन देगा By the after change it. Percent of the देखिए सर मैं कनेक्ट होम चल नहीं गया ये ना फंड में ये तो You have to fund it. Talk to them. They will enable it. They have to give you a key. It takes like you got to call in your broker, and they have to give you an app. And did they install it from the IP key? App जो है ना वो install करनी है वेबसाइट से. IP key के बगैर नहीं चलेगा. हाँ वो install करनी है. हाँ सही. We just send them money. No. Huh? You have to just send the money. The data will come in account. Is your account open? So call them. Yes, you want it. Yeah, that's a fund. Maybe $100. Fund it. When you fund it, call Interactive that I need to connect to Lydia. They will send you some key. yeah, but So I'm going to go tell him to send me to another account, है ना? To another account, the one I can open. Then maybe
Yeah. Okay, look at the back. First, you have to make sure you pressed it. Oh, that's what I was saying. No, no. Like the arrow. Yeah. Now try it. Yep. No, in the gray area. I have to in the gray area where it says bullish. Where it says bullish, right click. Okay. You have to click in the area. Yeah, but yeah, oh, चार्ट चला गया था, वो पीछे चला गया. If you see that arrow on that thing, meaning you're watching history. You gotta be live on the current market. We have to buy. No, if it's green, buy. If it's red, sell. From where? Mid-band. That's the rule. आपका नहीं आ रही है? आ गया, ठीक है. आपका आ रहा है? ठीक है. सिर्फ इनका मसला आ रहा है. ठीक है. ठीक है. No problem. So, if you want to buy below it, this is called the buy limit. If you want to buy above it, this is called the sell above it. It's called the sell limit. So that's it. प्राइस लगाएं मिड बैंड पे, प्राइस आएगी, आपको उठा के ले जाएगी, 2 पॉइंट देगी, बंद करें, कंप्यूटर बंद करें, डन. $100 रोज का, $150 लें. प्रैक्टिस के लिए बेशक 23 घंटे खोल देने, लेकिन प्रैक्टिस भी राइट डायरेक्शन में करें, गैम्बल ना करें कि SRES देख लिया, ग्रीन है दोनों चार्ट, बाय, ग्रीन रेड है दोनों चार्ट, सेल. बस इतने में ही $100 बन जाते हैं. 2 दफा बॉटम ऑफ द बार इधर आई 30-20 में. आपका ये नहीं आ रहा, ये बाएं. सर जब मैं टॉप डाउन पे जाके खोलता हूँ, जब ये विंडो ओपन होती है तो आता है, हिडन करता हूँ तो नहीं, आपको जब तक ये चार्ट ट्रेडर ऑन नहीं होगा नहीं आएगा, तो इसको ऐसे रखना है. मेरा होता है विदाउट द नहीं, आप उसको हिडन कर देते हैं ना, आप उसको हिडन किया तो या हिडन रखें या चार्ट. हिडन करता हूँ. हाँ, तो मुझे राइट क्लिक की ऑप्शन नहीं देता, ओके, सामने रखता हूँ. ठीक है, वो आप कॉन्फ़िगरेशन कोई होगी. हाँ, वो मैं उनसे पूछ लूंगा आईटी पे. सिमुलेशन नहीं होता. मेरा चले गया, मतलब आप रिन्यू नहीं किया तो चले गया, and it was a loss on that. फिर ठीक है, वो नया अकाउंट खरीद ले. वो खत्म हो गया, वो डेड हो गया. वो आपको रिन्यू तो नहीं किया होगा उन्होंने. मैंने ऑप्शन दिया तो ठीक है, दैट्स फाइन. लॉस किया उसको छोड़ दो. हाँ, वो तो खत्म हो गया अकाउंट, नया ले. यस, विद अ न्यू आईडी, राइट? करेक्ट. सिमुलेशन नहीं होती तो वो मैं आईटी से पूछूं. हाँ, कर देंगे. Can you check if it's bought? If I bought the stock or the S&P 500? Okay. No, but did you place an order? Yeah, so okay. Yeah, no worries. After orientation, अभी R1 पे you है. placed an order. It has R1 पे buy कर it दिया. hasn't picked up. So when the price, you did 100% right. You're sitting in a mid-band. When the price comes there, it will pick you up. You're good. You're good. It's still in order. Correct. That's just the place in order. लेना चाहिए.
नेक बैंड अभी तक 5694 पे है और मार्केट मूव ये 5696 पर है। बैठना है माइक के साथ हैंड पकड़ के बिगिनर्स बिल्कुल जो आते हैं इनको बाय सेल का नहीं वो हेल्पफुल है टू मच। All right, let's see going up. So that is all to it. Every day, green to buy, red to sell. That's all. Like, there's not really, it's not complicated. Or until the area comes. +5 का stop loss. That's it. 5 ऊपर निकल गई तो भाग जाएं. 20 stop loss. Sorry? रेड सपोर्ट है। Sellers to buyers. कोई एरिया नहीं है. बाहर बन पड़ी गई बस. Still for अभी अभी बायर है ये ऊपर a buyer. तो ऐसे भी इधर भी दिखा रहा है और 0 से ऊपर ही है तो बाएंगे। हाँ डन हो गया. आपने ट्रेड कर लिया. क्लास हो. इवेंचुअली मैं ये चाहता हूँ आप पूरी दुनिया में कहीं बीच पे बैठे हो, एरिया आए, 5 पॉइंट लिया, मिड बैंड लिया. ये तो फिजिकल आपको बांधने वाली बात है ना. आपको फ्री करना है यार. आप कंप्यूटर खोला, न्यूज़ देखी, ट्रेड डाला, 2 पॉइंट लिए, खत्म. दैट्स इट. In future, if somebody changes his country, आपके साथ कोई मसला नहीं एक्सेप्ट पाकिस्तान. पूरी दुनिया का ठीक है. मैं पाकिस्तानी भेजना इनको पाकिस्तानी भेजना आजकल नहीं देखिए हमारे पास एक आखिरी कंपनी थी बुलनॉक्स. उन्होंने भी पाकिस्तान को बैन कर दिया कि इट इज व्हाट इट इज. हमारे करतूत ऐसे ही हैं तो फिर रिजल्ट भी तो ऐसे मिलने हैं. हमें कौन सा जो हमने डाला हुआ है ग्राउंड में से वही बाहर आना है. कौन सा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंट्री में हो, कहाँ हो. नो. जैसे सपोज भाई अगर कहीं और चला जाता है, मतलब दुबई चला जाता है, पाकिस्तान का है इंटरनेट ही नहीं चलने का. तो आपने स्पेशली पाकिस्तान जाना चाहिए. अच्छा देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल है. मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियो है. प्लेन नोवा स्कोशिया से चल रहा था. ठीक है. इंटरनेट मैंने वो लिया हुआ स्टारलिंक का उसका. ठीक है. वो लेते हैं आपसे $40. आपको एमिरेट्स में दे देते हैं इंटरनेट. ठीक है. वहाँ पर बिजनेस क्लास में ट्रेड आया. 9 o'clock हुआ. मैंने ट्रेड डाला FTMO का लाइव. आपको इंटरनेट चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, पूरी दुनिया में आप ट्रेड कर पाएंगे. कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको. इसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे होगी? सपोज अगर किसी ने पैसे देने हैं या लेने हैं, वो इसकी जो पूरे इकोनॉमिक्स इस तरह चलती है कि
आपने अकाउंट कहाँ खोला है पहले वहां डिपेंड होगा। मेरे ख्याल आप थोड़ा सा वो सुनना चाह रहे हैं। देखिए, आपने आज लेजेंड खोला कनाडा में, ठीक है, कनाडा में लेजेंड खोला, आपका बैंक कनाडा का होगा, तो सारे कुछ इन एंड आउट कनाडा है। अब या कनाडा को छोड़ जाते हैं, ठीक है, मेरे पास गोल्डन वीजा यूएई का है, मेरा ठीक है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है वहाँ, सब कुछ है। तो अजमान में G+3 बनाया हुआ है, तो 21 यूनिट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं और 7 शॉप्स हैं, राइट। सो हमने, क्योंकि वहाँ पर रेंट क्या अच्छा है, लॉगिन कर दो वेरी नाइस। सो इफ आई हैड अ चॉइस टुडे, मैं आज कनाडा तो निकलता, क्योंकि वो मार्केट अच्छी है इस वक्त और सेफ्टी है, सब कुछ है, इकोनॉमी नहीं, मुझे सारा कुछ कनाडा ने दिया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त वो अच्छी जगह है, राइट। सो इफ यू सिट इन दुबई, तो आप वहाँ का यूएई का खोल लेंगे, वहाँ का लोकल बैंक, राइट, ठीक है, खोल लिया। लेजेंड्स को कहेंगे कि मेरा ये एड्रेस है, ये मेरा फ़ोन नंबर है, लेजेंड्स आपको दुबई के अकाउंट में पैसे दे देंगे, तो ठीक है, दैट्स इट। तो आपकी जो लोकल टैक्सेस हो जाएंगे। आप कनाडा में आप सिटीजन हैं और इवन गाड़ी है आपके पास, तो हमें, अब वहाँ की प्रॉपर्टी हम यहाँ रिपोर्ट करते हैं क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। अगर आप उधर मूव होते हैं तो कनाडा में आपके पास गाड़ी भी नहीं हो सकती, अगर आपने कनाडा के टैक्स को अवॉइड करना है, ये रूल है। एक तो आप छोड़ें और फिर सिर्फ सिटीजन रखें, लेकिन उनसे कहें यार मैं यहाँ का हॉस्पिटल नहीं यूज़ करता, मैं यहाँ के रोड नहीं यूज़, क्योंकि टैक्स आप पे क्यों लगता है, आप यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप हेल्थ इधर का यूज़ करें, गाड़ी इधर रखें, घर उधर रहें, टैक्स उधर। टैक्स सिस्टम इस तरह चलता है कि अगर आपने 6 मंथ्स एक कंट्री में नहीं यूज़ किया बेनिफिट्स, तो आपको टैक्स नहीं। सो अगर आप यूएई चले जाते हैं तो कनाडा से गुड बाय कहें, सिटीजनशिप रखें लेकिन, या पीआर रखें, लेकिन ओन कुछ ना करें। अगर आपकी प्रॉपर्टी है फिर आप एग्जेम्प्ट नहीं, एग्जेम्प्ट हो गए। लेजेंड को कहा, पर्डिया को कहा, टेक प्रॉफिट को कहा, जीएफएफ को, भाई मेरा ये दुबई का अकाउंट है, खुद अपना जाए अपनी प्रोफाइल में चेंज कर दो। अभी आपने लॉगिन किया, उसको कहें कि ये मेरा नया एड्रेस है जी, बस दैट्स इट। इसमें और क्या मुश्किल, नो प्रॉब्लम। ये है फाइनेंसेस के। लेट्स सी, इसका पूरा आज के बस इतना देना है, वो कुछ निकाल लेना। लिंक से भी वो सिर्फ आज का ही देगा, हो सकते ये देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वैसे आप स्क्रीन जैसे आज ही है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके तीनों का ना, ये 3 आज ये तो गई दो, हाँ ये रह गई। हाँ, इसको चलिए क्लिक करके इसको भी चेंज करके इसका करते हैं, जैसे कल का है ना, जैसे आप इसको सिलेक्ट करके ये कल का स्क्रीनशॉट लो, हम ले स्क्रीनशॉट करके जरा ये मैं इससे करके इससे देन एस है ना, कंट्रोल एस यस नेम टूल खोल दो। सॉरी ना, हाँ वो उसमें शिफ्ट टूल शिफ्ट वो है, लेकिन पिक टूल नहीं शिफ्ट ये इसको ले ले। कल हाँ, और फिर इसको डेस्कटॉप पे सेव कर, या कॉपी करो एंड पेस्ट। ये वाले ये ओपिनियन हो गया। जो हाँ, अब आपने इसको पूछना है कि मुझे इसको सिंपलेस्ट वे बताओ। हाँ, ये देखिए इसको आप जो भी कमांड दोगे तो ये नो प्रॉब्लम जी, टेक केयर। वो मैंने स्पोर्ट्स में बहुत यूज किया है, तो वो लेकिन उसमें बिल्कुल यूज करके शुरू करता हूँ अच्छी चीज़ बहुत और लेट्स से स्क्रीनशॉट टेक केयर जी, टेक यहाँ पे प्लस पे आके जब आप प्लस पे करेंगे तो पूछेगा कहाँ सेव किए हैं, तो फिर जैसे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर यहाँ से भी आप दे सकते हो, जैसे इन्होंने तो वो आपको कॉपी कर दिया ना, या लिंक कर सकती हो आपके लेकिन मुझे नहीं पता अगर ये अनपेड वर्जन का सब जैसे ये है, बस करो ये लाइन मैंने पढ़ी, ठीक है, तो मार्किंग डायरेक्ट है कि एटीपी नीचे जाएगा। आज तो R1 नहीं आया, S1 नहीं आया, नहीं R1 ES का आया, नैस्डैक तो खाली पड़ा हुआ।
शायद आ जाए 2 के बाद, होपफुली। कोई बात नहीं, देखेंगे। इसको पढ़ के पहले हम ये देखो कि न्यूज़ ये है क्या, उसका इम्पैक्ट क्या है। ये तो कभी कम है, रेड का मतलब ज्यादा इम्पैक्ट है। बस ये है ही नहीं कुछ सर, पिछले 3 हफ्ते से इतना तेज था, आज जरा थोड़ा काम है, लेकिन जाते जाते 100 का तो ट्रेड मिल जाता है, इतना बुरा हाल भी नहीं है कि। हाँ, मिड बैंड चाह रहे थे, मिड बैंड ने 2 SRES देखे मैंने 150 के, एक R3 पकड़ा होता 50 का तो 150 यही बन गया, राइट। ये मेरा FTMO में ठीक जा रहा है इससे। नहीं, पहले हम वही जो आप अभी जा रहे हो ना, मैं वही सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ऑयल के अगर पहले तो हम इसमें जाएंगे कि इसके अगर एक सेल चार्ट दिया था, सेल चार्ट वो भी डाल दीजिए, ठीक है, वो बता दीजिए। इसकी इन्वेंटरी अगर ज्यादा हो गई तो इसका मतलब ये है कि डिमांड उसकी कम है, बिक नहीं रहा, उन्होंने स्टोरी में उसके आप बढ़ाएंगे वो डिमांड बढ़ा रहे हैं उसको ये सिर्फ डिपेंड करता है, ये वाला सिर्फ ये चार्ट करने दिया ना, क्रूड ऑयल का देखो हो गया। लेकिन सबसे पहले शिजात मैंने ना ऐसे मैंने मुझे नहीं पढ़नी आती, तो मैंने गूगल डॉक्स पे नहीं, मैंने पहले उसको सीखने की कोशिश की। कितना बता रहे हैं कब डाउन होगी, कब ग्रीन में डाउन होगी, रेड में हो गया फ्लक्ट है, यानी ग्रीन हो तो हमने सेल करना क्योंकि डाउन है। Only we are talking about crude. डाउन जाएगी तो हमारे लिए फायदा है, लेकिन हमें सेल करना पहले ये देखना इन्वेंटरी से मतलब क्या नहीं, जब डाउन जाएगी तो बाय करना। अगर ये नंबर ग्रीन है हाँ, और यहाँ अगर जो ग्रीन डाउन है तो वो नीचे जाएगी मार्केट में, हमें बाय करना है, सेल करना है, नहीं ग्रीन तो ऑलवेज बाय करना है। लेकिन यहाँ डाउन लिखा हुआ है। वो बता रहा है, सिर्फ न्यूज़ दे रहा है मार्केट डाउन है, लेकिन आपको बाय करना है क्योंकि हमारे फेवर में ग्रीन पे मैंने यही मिलियन छोटा ग्रीन में वो तो मार्केट डाउन होने वाली है। नहीं उसका देखिए पहले आप मतलब सीखिए। Close the trade, exit him. If you're in a bad trade, you gotta exit the trade. No, just click close, click close. More in their storage to sell. Nobody is buying it. The demand is low. So फिर वो क्या होगा कि उसकी प्राइस लो हो जाएगी, तो फिर बाइंग इज अ बेटर चॉइस, राइट। लिखा हुआ नीचे जा रही है लेकिन नहीं हमारी फेवर में है। ओके, अगर वो बाय अगर वो ग्रीन ऑलवेज बाय, ये सिर्फ न्यूज़ बता रहा है कि मार्केट डाउन है तो हमारी फेवर में बाय करो। So green is always not buying. ऑलवेज बाय, ऑलवेज बाय। Not for crude oil. Crude oil में genuine बात कर रही हूँ कि कुछ न्यूज़ का जो मार्केट नीचे जाएगी, इसीलिए तो सबने चार्ट दिया है। जब मार्केट नीचे जा रही है आप सेल करो, कितना जा रही है 10 अच्छा सर ने जब डैनियल सर पढ़ा रहे थे, डैनियल सर ने क्या बोला था, हाउसिंग मार्केट है वो जब नीचे जा रही है तो हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन मार्केट गिरी है हमारे लिए, अब मैं खरीदूंगा क्योंकि फिर मैं इसको ज्यादा में बेचूंगा। समझ रहे हैं, ये चार्ट ये बता रहा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। देखिए कुछ देखिए, अगर ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं, एग्जाम इन्वेंट्री ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा इन्वेंट्री होगी प्राइस नीचे जाएगी, वो ग्रीन में नीचे जाएगी। हम बाय करेंगे ना, नहीं लेकिन गिरने दें, फिर बाय करेंगे जब बॉटम पे, उस वक्त हम सेल कर रहे होंगे, लेकिन जब मिड बैंड आ रही है वो सेल कर रहे हैं क्योंकि प्राइस नहीं हाँ, लेकिन एक पॉइंट पे आके आप बाय करेंगे जब वो एरिया पे आ जाएगी, ठीक है, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी, यस, लेकिन किस पॉइंट पे हमें, लेकिन जब वो नीचे जा रही होती है तो आप सेल कर रहे होते हैं ना अलोंग द वे। आपने जब नीचे रेड है तो सेल करेंगे, जब बैकग्राउंड कलर ग्रीन है आप बाय करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब सस्ता हो जाएगा माल फिर आप बाय करेंगे, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। अब जिस तरह ग्रीन पे जाते 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 मैं वेट कर रहा हूँ R2 का, वो ग्रीन में ऊपर जाएगा ना, चला गया, लेकिन R2 पे चीजें इतनी ज्यादा बाय हो चुकी हैं, लोगों ने बेचना है, अब ओवर बॉट हो गया, तो ऊपर जाते ओवर बॉट होते हैं, नीचे जाते ओवर सोल्ड होता है। अब ऑयल है,
ग्रीन आई, इन्वेंट्री ज्यादा आई, प्राइस गिरनी शुरू हो गई। जब गिर रही थी तो आप सेल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया, S2 आ गया कि ऑयल कहता है कि अब इतना ज्यादा बिक चुका है कि अब लोगों ने बाय करना है, तो S2 से आप बाइंग शुरू कर देंगे। दिखा रहे चार्ट में, हाँ, ग्रीन डाउन, ग्रीन हम सेल करेंगे। ग्रीन में नहीं, ये सिर्फ मार्केट का रिएक्शन है। ये सिर्फ रिएक्शन है कि अगर ग्रीन है और वहां अप है तो मार्केट ऊपर जा सकती है। कई दफा इंटरेस्ट रेट गिराया, मार्केट ऊपर गई है। तो वो ये थोड़ा रफ गाइडलाइन है कि CPI हो तो क्या हो सकता है। अब देखें, वेंसडे को इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट है 2 बजे। ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट रोकेंगे, ट्रम्प कहता है नीचे करो, तो उस दिन सही जंग चलनी है। लाइक इट विल बी सही। वेंसडे को 2 बजे तबाहियां होनी है, मजा आएगा ट्रेड डालने का। जो भी अकाउंट जिधर से भी डाल दो ना, पैसे बन जाएंगे, क्योंकि वो इतनी तेज आती है स्विंग्स, स्पेशली फंडेड अकाउंट में जिन्होंने पास करने होते हैं ना, PAs में नहीं, वो तो अलाउ नहीं करते स्टेज 2 पे। तो आपने कहा भाई इस एरिया में आई फेंक दो, इस एरिया में आई फेंक दो, तो क्योंकि आज इस तरह डेड है हमारे हिसाब से ये मार्केट बहुत। लेकिन इसके अंदर भी 100-200 निकले हैं आपने। लेकिन हम लोग असल में यूज टू हो गए हैं T20 का, तेज तेज R2 S2 खेलने का। तो ऐसे ही सर, नैस्डैक नहीं एक कैंडल से उतर रही यार। Don't worry, it's okay. You're day one. Don't look at take profit and loss from day one, man. You need to practice first where to enter and nice. है जी, हाँ जी बताएं। एनी डेस्क, हाँ जी, क्या सेट करना है मैंने? चार्ट देख लो, मैंने सेट किए हैं। नहीं, मैं फिर रेकमेंड करता हूँ कल जो है ना, आप आके सुबह माजिद भाई के साथ बैठना है उस ऑफिस में, पहले वाले। हाँ नहीं, नेक्स्ट से नहीं, उससे वो जो माजिद भाई जहाँ बैठते हैं ना, उनके साथ बैठे हैं, उनसे कहें मैं day 1 हूँ मेरा। उन्होंने आपको बाय एंड सेल दिखाना है कि ये बाय क्या होता है, सेल क्या है, एवरीथिंग। जो ग्रीन जो मिड बैंड है, एग्जैक्टली। तो मेरे कंप्यूटर में ग्रीन को या कुछ और दिखा। हाँ कर सकते हैं, उसको डबल क्लिक करें, उसको चेंज कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे को 2-3 स्टूडेंट कलर ब्लाइंड है, नो प्रॉब्लम, बड़ा नॉर्मल है। तो वो ग्रीन को पर्पल कर लेते हैं तो नजर आ, बहुत नॉर्मल है। तो हमारे पास वो ऑप्शन है, डबल क्लिक करें, उसके अंदर आप टेक प्रॉफिट। न्यूज़ पढ़ रहे थे तो वही है मेरा ट्रेड। जैसे मैं हूँ उस ऑफिस में जब हम होते हैं, इधर नहीं आ सकते। अगर हमें यहाँ से वहाँ जाना हो, जा सकते हैं। बिल्कुल, वो वाले इधर नहीं आ सकते, ये वाले उधर जा सकते हैं। हाँ, सुखमन, वो कोई मसला नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। आज 2-3 स्टूडेंट उधर गए हुए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन पूछे बड़े पेशेंस से जवाब। है जी, 4000 पहुंच गई थी, 4000 ES कहाँ पहुंची? एक वक्त ना 4000। हाँ, काफी तेजी से ट्रम्प ने वो चीजें वापस की हैं ना, जो तेजी से ऊपर नहीं, तेजी से नीचे। वो 3 बजे तक होती है सुखमन भाई। 2 बजे, क्योंकि 2 बजे रियली मार्केट जो है ना स्लो डाउन हो जाती है।
तेज तेज हुई जल्दी से जा कुछ ना आई ये रियलाइज प्रॉफिट ये तो नीचे गया इसी लिमिट और बेटर अभी तो नीचे ही जा रही ऊपर जाना शुरू भाई टच नहीं करता किसको? SRES के बाद ये पहला लोअर हाई है, देखें नीचे आती है कि नहीं। अभी तो 1 घंटे से उसी कैंडल पे खड़ी है। वो तो एजेंडा उसके व्हाइट बैंड के साथ मिक्स हो रही है, इसलिए मुझे पिंच लग रहा है। ऊपर एक और लगाए यहाँ से चली जाना S1 पे आर तो that would be a good I 5 minutes I mean ये तो नहीं है लगा लीडर का क्यों इसमें कुछ नहीं है ये बुलिश बता रहा तो बेरिश करता लेकिन बुलिश होने के उसका नहीं है वीडियो में कौन ट्रेडर खुल गए अजेंडा हो गया ये क्यों नहीं हो रहा टेस्टिंग ही कर रहा है क्रॉस रियलाइज किया वो प्रॉफिट के बाद होता है, कमीशंस के बाद रियलाइज्ड होता है। वो असल चीज़ है जो आपके जेब में आएंगे। नंबर ऑफ लॉट्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ट्रेड्स पे डिपेंड करेगा, सारा आपका कमीशन। 871 SRES देखें कंफर्म होती है कि नहीं, हो तो रही है। का रंग चेंज करेगा तो हाँ, क्योंकि उसको भी 2-3 दफा वो आके रिजेक्शन विक लगा चुकी है। नीचे जा रही है 5693.5 R1 की रेंज में तो है लेकिन नीचे जा रही है नहीं R1 के नीचे नहीं
कलर का कुछ पता नहीं क्या हुआ, वेट करना एजेंडा है लेकिन वो स्विंग हो रहा है। दूसरा चार्ट क्या बोल, हाँ ये टेस्टिंग कर रहा है, एक बार और आएंगे तो नीचे जाएगा। तो नीचे नोट करते हैं क्या, नीचे नोट करते हैं नहीं यहाँ पर थोड़ा नीचे में चलना है, थोड़ा वो नीचे 5693 पे दे रहा है, अनलॉक करो। SRES कंफर्म हो गया था, सेल क्या कलर हो गया, कलर चेंज हो गया। मैंने 569 नंबर है। तो जैसे कलर चेंज होता है 2020 पे फरवरी के बॉक्सेस हो जाते हैं। हाँ, वो फिर फिबोनाची वाले ट्रेड डिफरेंट होता है, कि आप उस बॉक्सेस के अंदर जाके बाय करेंगे, वो रिट्रेस पॉइंट होता है। सारी इसकी ट्रेड जैसे अभी आई, जैसे आती है जब कलर चेंज होता है तो हमने ट्राई करके टॉप अपनी बार ली। हाँ, अगर वहां पर सर फैमिली जो बॉक्सेस आ जाते हैं अगर आ जाए बॉक्सेस तो बेटर है कि उस तरफ जाएगी, उस तरफ देखिए अब वो एक सेकेंड, नहीं, लेकिन इसका मतलब है ग्रीन की तरफ जानी चाहिए, 5681 तक जानी चाहिए प्राइस। हाँ, बॉक्सेस हमें चाहिए। अच्छा मैसेंजर के अगर जब रेड आता है तो नीचे की तरफ होता है। नहीं, वो दोनों तरफ होते हैं, रेड एंड नीचे। जब नीचे आएगा, एक सेकेंड, किस तरफ? रेड में आपको नजर आएगा येलो एंड रेड एंड येलो, ग्रीन एंड ब्लू। तो हमें चाहिए होते हैं कलर्स। यस, अब प्राइस मिड बैंड पे टच कर रही है, मैंने 592 में ट्राई किया, सेल किया है सर, ऐसे ना कहें। मैंने भी 5692 पे ही सेल किया है, और अगर वहां से ट्रेंड चेंज हुआ मैं निकल जाऊंगा। आ गया, देख प्रॉफिट डन हो गया। एग्जैक्टली फिर बट ठीक है, इट्स ओके, 50-50 करते जाए, आपका गेम खत्म जी। अरे भाई आप 150 तुम बनाया, मैं 129 मिले, बाकी तो कमीशन में चलेंगे। कमीशन की 150 टोटल बना, हाँ 28 मुझे मिला, हमारी मतलब जो $22 कमीशन। ओके चलो नदी में निकला। अरे मैं आईटी के पास जाके चेक करवाऊंगा। तो ये टारगेट सही है राइट, 125 सर 100 से 150, मैक्सिमम 200 कंप्यूटर बंद करें, डन है। ये 30 दिन आप रोज के 200 कर गए ना, आप 10,000 मैं लिख के दे देता हूँ, क्योंकि आपके पहले एक स्टेज पास होगी, दूसरे आपके पे आउट्स आने शुरू हो जाएंगे $150 डेली से। 100 से भी आ जाते हैं, लेकिन रोज का गोल है 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट। फिर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस ज्यादा होते जाएंगे उसका। लास्ट वीक आया था दुकान जो उस दिन आए थे। हाँ हाँ, जतिन भाई जी,
हम बैठे थे वो करे इतने से होने ना मैंने हाँ 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 वो 50 डॉलर पर पॉइंट हाँ जी यहाँ नीचे जा रही है ऊपर जा रही है वहीं पर खड़ा हुआ है प्राइस R1 के अंदर ही। नैस्डैक का तो आज कोई ट्रेड नहीं बना जी। से नीचे चले गए वेरी अनयूजुअल हो गया है। नहीं वो होते हैं दिन ऐसे आते हैं कि हर कोई ना 7 मई का वेट कर रहा है, लेकिन 2 दिन बाद मार्केट ने इतना तेज हो जाना है ऊपर या नीचे की तरफ, क्या पता ये 22,000 को तोड़ दे 450, मीन की ऑल टाइम हाई 22,000 है इंटरेस्ट रेट सर। तो इतना बड़ा है कि धमाका चल रहा है कि इसने क्या होना है। इंडियन गवर्नमेंट के गिराएंगे इंटरेस्ट रेट वो तो ऑलरेडी हमारी यूएस से फर्क नहीं पड़ता। अब ट्रम्प कहता है नीचे जाए, वो जो पावल है वो कहता है नहीं नीचे नहीं जाना, अभी हमारे पास इतना नहीं है, तो वो दोनों फंसे हुए हैं। ये हो या वो ट्रम्प पैसे बनाएगा सर पैसे वो इनसाइडर ट्रेडिंग इतनी करवा गया है, वो उसने कहा है कि टाइम टू बाय, और जो है ना सर मेरा ओपिनियन होता है रोज मार्केट गिरे, अल्लाह करे रोज आए और S3 पे चली जाए, गिरे और S3 पे चली जाए। ये हम लोग ये चाह रहे होते हैं बस। सुबह 8-9 बजे हम बैठे, 9:15 S3 पे हो नहीं S3 से बाय करते हैं हम, गिरती है ना जिस तरह आप गिर जाए, क्योंकि अब हुआ ये कि 9 से 1:30 बजने वाला है, नैस्डैक किसी भी रेंज में नहीं गई। तो क्या है आज तो वो जिसे कहते हैं ना थोड़ा चलो यार हाजिरी डालने के लिए कोई ट्रेड डाल दी है कि यार स्लो हो जाता है बहुत। देर से आ गई थी, लेकिन अब देखिए मैं 2 बजे तक तो एटलीस्ट नैस्डैक R2 R1 में घुस जाए ना, कुछ तो मिले सर S3 पे जाए हाँ तो बाय कर लें। हाँ जनरली 5 पॉइंट वहां पर भी ये नहीं है हम बहुत बैठे हैं, चलो यार छोटे छोटे 150 बनते हैं, वहाँ 800-900 बन जाता है, क्योंकि वो बड़ी स्विंग आई 20 पॉइंट ले देगा वो, 20 पॉइंट 50 का 1 पॉइंट $1,000 बने खत्म। ये है सिचुएशन सारी। और जी वेलकम, वालेकुम अस्सलाम जी, बड़े से बाद स्कूल था तो राफेल साहब ये बताइए क्या 22 पे जाएगी है जी 22 22 वाले काफी बैठे हुए हैं मेरे साथ। नवंबर से वो गिरी है तो ऊपर जाएंगे, नहीं हमें डर है कि दोबारा नहीं, क्योंकि मैं इसमें नहीं आप शॉर्ट में है लॉन्ग में? शॉर्ट में क्यों है लेकिन मैंने कहा ऊपर जाएगी ऊपर नहीं कौन क्या है आपकी अच्छा नहीं, ये तो अब चीजें करेक्शन की तरफ जा रही हैं, वो हो गया ना जितना तबाही होनी थी, अब ऊपर जाना ही है, ऊपर जाना। आप बोल रहे हैं ना नीचे नहीं देखिए ये इंटरेस्ट रेट पे जो उसने तबाही अभी अगर मचाई तो 90 दिन बाद करेगा, जो टैरिफ्स रुके हुए हैं, टैरिफ्स रुकने खुलने दोबारा 90 दिन बाद फिर थोड़ी हलचल आएगी, लेकिन जाना इसने इवेंचुअली ऊपर तो नहीं मेरा नहीं ख्याल कि अभी मेरा ख्याल है बॉटम लग चुका है, जो हर चार्ट्स में वो देखें 4800 पे हम S&P पे आ गए, 16,000 पे नैस्डैक पे, तो पर्सनली बॉटम मेरा ख्याल है हो चुका है। यस नो प्रॉब्लम, तसल्ली दे सकता हूँ मैं यही कर सकता हूँ उस नजूमे की तरह हूँ जो देख के हालात पे जी आप फंसे नहीं जी हो जाएगा ठीक है, मुझे क्या पता, लेकिन एनालिसिस यही है कि थिंग्स शुड बी ओके, क्योंकि कुछ लोग ऊपर मेरे साथ 21-22 हज़ार पे बैठे हुए हैं CFD में। शुक्र है CFD है, वरना कॉन्ट्रैक्ट ना चेंज होना पड़ता है। अच्छा एक्चुअल स्टॉक है,
कहीं का अंदाजा करें, मैंने भी 500 अभी पिछले दिनों जब नीचे गई थी तो मेरे 15-16 समय लगे। लेकिन उस वक्त एवरेज करके थोड़ा सा ऊपर ले आना था। मुझे पता ही था कि वो नीचे ना चली जाए, इसलिए बार में फंसी। खैर अब चलो देखते हैं, निकल जाए तो। हो जाएगा, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टेक केयर जी, खुदा हाफिज़। मेरा बात सही है, मुझे भी करना पड़ेगा। अभी तक नहीं आया, सबके वो उठेंगे देखिए। कैसा गया जी आपका उधर का विजिट? ठीक है, ठीक है। It was good. मैं realized कि मैं कितनी undisciplined हूँ। अच्छा, वो लोग तो आपको बंद करवा देते हैं उधर। मेरा स्टाइल डिफरेंट है, उनका बहुत डिफरेंट है। वो 150 के बाद कहते हैं घर जाओ। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था ना? ठीक है, Till 11 तो कोई ट्रेड ही नहीं किया ना। हाँ ऐसा ही है वो। मैं सोची मैं बैठ के टिकटॉक पे कैट वीडियोस देख। ठीक है, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हेलो सर, की हाल चाल सर? बैठे हैं सर? आज तो बिल्कुल ही नैस्डैक ईएस, चलो मैं 5 माइक्रो ईएस ते लाते सी हैं। R1 ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਲੋਕਾਂ ਬੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕਰਾ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆਫਿਸ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੀਤਾ। फिर भी उन्होंने 2 ट्रेड ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿन ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ? ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 5698 and 5696 ਠੀਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਸਟਰ। ਮੁਰਤਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹੀ ਨੋਸ ਉਹ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਈਐਸ ਉਹ ਜਰਾ ਬੋਰਡ ਸਭ ਜਿੱਦਾਂ ਸਨੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਮੁਰਤਾਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਠੀਕ ਲੱਗਾ, ਵਧੀਆ। ਉਹਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸਡੈਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ट्रेड नहीं है, फारग बैठे हैं थोड़ा सा, लेकिन आएगा तो फॉरेन ट्रेड से निकाल भी देगा। R2, R1, S1, S2, तो ये सारे इंटरेस्ट रेट का वेट कर रहे थे। वही है, मैंने तो बात मार्केट सही हो। मैं कई बार करती हूँ से ओ 11 o'clock होने वाले हैं, आफ्टर 11 ट्रेडिंग नहीं करनी थी, सब जबरदस्ती ट्रेड पुट किया। नो नो नो, प्रोफेसर हाँ जी, जो वीडियो अपलोड हो गया आज का? हाँ जी, जा रहा है, लाइव जा रहा है, और शाम को सुपर एरियाज के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, जो भी आपकी ओरिएंटेशन है। लेकिन कल आप माजिद भाई के साथ बैठना शुरू में, बिल्कुल सर 9 बजे आ जाते हैं। काफी पहले से बनी हुई है। नहीं लेना चाहता नहीं, अब देखो 132 ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ। हाँ हाँ, R1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨੰਬਰ डिफरेंस भी घट है, 100 पॉइंट का डिफरेंस है जी सर बहुत, क्योंकि पूरी रात मूव नहीं हुई ना। राती में कीते ठीक है, शॉर्ट च रहे हो। नहीं मैं शॉर्ट देखो, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਤੀ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੈਲ ਕੀਤੀ। ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 95 ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਸਿੱਧੀ 200 ਪੁਆਇੰਟ ਥੱਲੇ। नहीं क्योंकि ओवर 240 तो उत्ते से ही ना। नैस्डैक ईएस दोनों जब रात को संडे को खुली है तो शॉर्ट करेंगे। मैं 2 माइक्रो ला के निकल गया, मैं कहा ठीक है। $10
30 तक की 20 हफ्ते चल गई सी हाँ, हाँ। मैं जे पता क्यों वैल्यूएशन सारे निकल जाने सी की तारीख सर आज मैंने ये भी समझ आया मेरे मिड बैंड क्यों फेल हुए Okay. Reason? सर बिकॉज मैं हर सेटअप मिड बैंड पे एंटर हो जाऊंगी सीधे 2 पॉइंट लगा दूंगी सो does they told me to go for only 1 point Okay, ठीक है। and this is how एक पॉइंट पे आ जाना है generally not a problem. चलो, which good thing is that it was a positive visit there, right? So that's a good thing. All right, time to go.